An enthralling contest between the two informed sides is on your way. Hello, good evening and welcome to Multan Cricket Stadium for game number 26. It's Central Punjab taking on Sindh. The two teams arrived. Central Punjab on the back of a win would like more, and Sindh have just gained from strength to strength. They've got a lot of wins under the belt and they've got 10 points. It's a very straightforward situation for Central Punjab. They need to win their games, remaining ones, to stay alive in the tournament. Sindh, on the other hand, can have a breather. They're already 10 points and are right on top of the table. Let's head down and we'll get the toss with Shah Faisal and the captains. Game 26 of Kingdom Valley National T20 Cup, and this one is coming between Central Punjab and Sindh. I've got the two skippers, Qasim Akram, Saud Shakil, and the match referee, Mr. Javed Malik. Qasim has got the coin. Give it a flip. Tails. Tails is the call. Tails is the call. Tails it is. Sindh has won the toss. Saud? आज भी हम पहले बॉलिंग करेंगे. पहले बॉलिंग करेंगे. विकेट देख रहे हैं, डिफरेंट बिहेवियर है विकेट का, लेकिन टीम की स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं. हाँ, हमारी चेजिंग स्ट्रेंथ है तो हम उसी को बैक कर रहे हैं और पिच थोड़ा सा स्लो साइड पे, तो बस कोशिश करेंगे कम से कम पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे. सही. और कुछ टीम चेंजेस आपकी? हाँ, एक चेंज है, गुलाम मुदस्सिर खेल रहे और मीर हमजा रेस्ट करें. और आपका आज आखिरी मैच है ग्रुप स्टेजेस का, तो 3 दिन आपको जो है दूसरी टीमों को देखना पड़ेगा. इस बारे में कैसे रीड करें टूर्नामेंट की ओवरऑल सिचुएशन? जो हमारा आखिरी मैच है हम तो बस उस पर फोकस किया है कि मैच जीतें और अपने आप को फुली क्वालिफाई करें सेमीफाइनल के लिए. जो दूसरों के मैच है वो फिर बाद में देखेंगे. चलें, ठीक है. थैंक यू सऊद. गुड लक एंड हैव अ गुड गेम. कासिम, आप टॉस हार गए, पहले आपको खेलना पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें विकेट बड़ा अच्छा है और कोशिश यही करेंगे कि एक अच्छा टारगेट सेट करें. और आपके लिए मस्ट विन गेम है, हर गेम मस्ट विन गेम है. कैसा मूड है कैंप में? जी बिल्कुल, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे. बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में. और टीम चेंजेस? 2 चेंजेस हैं. अब्दुल्ला शफीक की जगह अब्दुल्ला शफीक आए हैं टीम में, इरफान न्याजी की जगह, और वकात मकसूद की जगह अहमद दानियाल आए हैं. ठीक है कासिम, हैव अ गुड गेम एंड गुड लक. थैंक यू. So the news from the center is that Sindh has won the toss and they will be bowling first. Let's have a look at the teams. So 2 changes for Central Punjab. Abdullah Shafiq comes back. Ahmed Danial replaces Waqas Maqsood, who's doing pretty well, if you ask me. And Sindh leaving out the hero from the previous game. And Ghulam Mudassir gets an opportunity. So left arm replaces a left armer. Ghulam Mudassir being promoted from the second 11 to Sindh side. I think that is a good change. Mir Hamza, as you just said, the hero from the last game, with the bat though, not quite with the ball. And Ibrahim Ahmed, somebody who's just been called for national duty. What a proud moment that must have been from this youngster who's bowled brilliantly in this tournament with a lot of control. Abdullah Shafiq is back, so is Ahmed Danial. Yeah, it's the match between the topple tippers and the team that is right at the bottom. Central Punjab it's a must-win game for them if they have to keep their hopes alive in this tournament. If they lose this one, they're almost out of this tournament. Then they'll have to wait for other decisions, other matches. Sindh are pretty at the top. They would like to finish on a high with the win. Umpire Arslan Raza. It's good to see him coming from the Asia Cup, joining the national T20. Pitch have played nicely. It's even, it's nicely rolled up. A bit of cracks though, but they won't matter. Under lights, the ball skids. I think that is a good toss to win for Sindh. They will be batting second, and this pitch we know that it gets better and better second time. And it's get easier to bat under lights also. So inside, they've played some brilliant cricket in this tournament. They've been wonderful.
And they've been lucky that they've won the toss and chased down some big totals. That man on your screen, Shajil Khan, is in good touch. Imran Javed, the umpire, alongside S. Sandraza, two very good umpires, will be officiating this game. And we have change in Central's opening department too. That's Faizan and Abdullah Shafiq to open. Making sure everything is in place, because this is a big game, especially for Central Punjab. They made one change. And this side, Abdullah Shafiq coming in. Afraid Irfan Niazi, good record, 997 runs, the best of 102. That shows that he can play long, he can play big. Strike rate also not bad. He's been a welcome change for Central. Faizan, 255 runs. That strike rate, 153. That is the most impressive part of his batting. Best of 72. And since the time he has joined the side, it has changed for Central. So they've decided to bowl first, Sindh. Let's see what Central Punjab can manage on this pitch. All right. One slip in position. Got a point, cover extra, mid-off, third man on the offside. Short fine leg, deep square leg, and a mid-on on the onside. Imran Javed, the umpire, says play. Sohail Khan with the first ball. Good looking shot, but to a fielder, Saim Ayub, and we're on our way with match 26. He'll feel comfortable, confident after that shot. Abdullah Shafiq is making a comeback in the Central side. And probably Central realizing that this is a big game. They have to win. They have to bring on their best players in this side to keep their hopes alive for this tournament. Oh yes, oh yes. Lack of form and a bad run continues for Abdullah Shafiq, hanging his bat out, inside edge onto the stump. Sohail Khan is amongst wickets. It's not working. Nothing is working for Abdullah Shafiq. Again, playing away from his body. The new ball, I don't think so. That's the right sort of technique. Sohail Khan, we all know that. He's happy. He's got this habit of taking early wickets. See all those wicket-taking deliveries. That is a wonderful start for Sindh. Abdullah Shafiq going without scoring. It's none for one. Mohammad Akhlaq, he's been jumping around from number 3 to opening slot. They've just been changing and shuffling with that batting order. Central Punjab, now he's coming at number 3, the very important position in any format. And he's facing Sohail Khan. Central Punjab, none for one. That ball that got Abdullah Shafiq had that outswing into it. It was moving away, shaping away from his bat, and it got the inside part of it. His bat, you just notice, it's just hanging out away from the body. Yeah, absolutely. And we all know that he's technically very correct, but the pressure of not performing probably getting to him. This is not what we used to see of Abdullah Shafiq. He's usually a very compact, very decent player, but this time playing away from the body. And yes, Sohail Khan definitely knows how to get wickets.
First runs off the bat for Central Punjab come from Akhlaq's bat. Off the mark with a single. Yeah, everybody in Central Punjab, they rate Akhlaq very high. He's a wicketkeeper batter in the side. And this is the time to deliver. This is a big match. Central would be hoping that he delivers. Talking about Faizan and delivering, that he has been magnificent since the time he has joined Central Punjab. They've started winning because of that early start that he gives. Those first 6 overs power play, he utilizes them. Just careful. Can do that. Because Sohail Khan is a very experienced campaigner. You just don't want to be missing out on this opportunity. Just don't give your wicket away. Just don't throw it away. Faizan has been their mainstay, at least in the last 3-4 games. Faizan's really taken the responsibility of Central Punjab's batting in the top order. I'd like to see one more fielder in the mid-wicket region. Sohail can turn it both ways. So if he's setting someone up, bowling out swingers, he needs to bring one in. The singles have happened in that region, 2 for 1 after the first over. Central Punjab's journey so far in the National T20 this year. And you can see that losses, first 4 of them, then a win, then a loss. But the last 2 games have given them some confidence, especially beating Khyber Pakhtunkhwa in 1. Again, there's nobody at mid-wicket inside the circle. You just need that bit of protection in that area, unless your bowler is going to bowl everything across, angling away from the right-handers. You see that gap, the square leg umpire in between. You got the fine leg and the mid-on. Inside the circle I'm talking about, they do have a deep square leg. Maybe they're inviting the batters to go in that area. If you play cross, this pitch skids on a little. You can tell by the way it's hitting the bat, it skids on. You want the batters to play cross, so that brings that LBW in play. The Central camp, tense faces, and why not? It's a must-win game for them. They have to win this one to stay in the tournament, or else they're out. They're going home. Saad has been busy. It's the 3rd time the ball's gone to him. Just the way he hits it, so hard. And on a pitch like this, I'm sure this area, the point area, the cover area, they will be tested. Because once the ball skids, we'll go to that area most of the time. Ghulam Mudassir being promoted from the second 11 to this. He's been around for a while. Very promising fast bowler he is. Just a bit of shape back and an inside edge as well. Again, playing away from the body. We know Faizan is not a technically correct batter, but he's a hard hitter. Once he gets going, he really means business. And we know that he can hit big, long. He's the same sort of a player. He doesn't like to hang around often.
In the air and oh! The big man's dropped it. I thought he got there. He covered good ground to his left. Returning the favour from the other game. Shajil Khan, that was an easy one, simple one. Look at that. Oh, you don't do that. At this level, you don't do that. It's been the day of drop catches, and how disappointed is this young man looking for a place in his team, and you dropped him. It could have been two. Just forcing the shot again. This is not the type of pitch that you'll be playing these sort of shots, and Shajil Khan has made a mess of it. Probably suggesting that the ball did lose in the lights. Look at Sarfraz in the background. He's not saying anything. He's quiet. He's quiet. It's just the beginning of the game. But it won't be long that we see him talking. 2 overs, 3 for 1. Sohail Khan will continue in his second over. There's no slip now. That mid-wicket is now in place. The one which I was requesting for. They've been careful, both Fizan and Akhlaq. Well, we know all know him, Ahsan Raza. 138th T20 match. Very experienced. A very good umpire also. Hardly gets them wrong. Shout. That's a nice shout, but it's just probably going down the leg. That's what the umpire feels. Close call. But as you said, might be going down. Yep. Will be going down. Good decision, umpire Sikandar Bakht. That's got to be out. Oh, once again. Not out again. Faizan at the moment playing with his feet, just not moving them at all, planting them where they are. I know why you get excited, because you could see the leg stump. Very close. Closer than the last one though. But maybe sliding down, maybe touching the leg stump. But he's asking the question, Sohail Khan. Long on in place now. Third man's coming in. Over number 1, he was moving the ball away. This over, he's bowled it into the right-handers, the 2 deliveries. Single. Sensible. Because Sohail Khan is swinging the ball. And when it's swinging, look at that. Away from the body. Away from the body. Bowled him. Straighter one. Again a straighter one. It's a good over. That line and length perfect, as you expect from somebody like Sohail Khan. Very experienced. Down the wicket, attack, maximum, over the head of the bowler. If you can hit it that clean, then we're talking. The use of feet, getting down to the ball. I think he noticed a thing or few, standing at the non-strikers, that his ball is moving around, so why not meet it early? This one didn't move. That's why he took that chance. There was a fielder earlier
for Faizan at long on, but they changed it. Now they've got him back at long on. But what's the point? They've got 6 already. Akhlaq is off to a good start. Wonder that missed chance from Shajil Khan, how much that will cost Sindh, because this is what Akhlaq can do. He can go big, he can go long. They would be hoping that he doesn't stay there for long, as he can hit hard, I tell you. If you're going to ball that, you may as well have your third man on the ropes. 15 for 1, big over this, 3 gone. If you have the fielder of third inside the circle, this is where not to ball. Sohail Khan, just an easy, he had to put the bat on the ball. Faizan, he's up and going. 15 for 1. Abrar into the attack. Oh, chance of a run out. Come on, what's happening? I cannot believe it. The fielder, forget about the batters. What are the fielders doing? Spartan has been screaming, come for a single. There's just no response whatsoever. It's bad cricket from both sides. He's not even listening to his partner. I can hear it from here. Come. He was just not listening to him, and now suggesting that it was my call. That's gone for 6. You'll not like it. Wait for the next ball. But this has been picked up nicely. And the ideal length for this type of shot. You bang in there, somebody of Akhlaq's talent is not going to miss out on this. That is why probably he wanted to keep the strike, that let me play him. 2 full on that occasion, 1 bounce. That is superb hitting. We've been waiting for this from Akhlaq. And he's come at the right time, and a very important time for the team. Just waited enough, gave himself a little room, and inside out over that mid-off fielder. That is quality. That is proper hitting. So he's taking the fight to Sindh now. Let's see what Abrar has in store. This time Faizan wants to take that. No decision. Acknowledging it. Probably there wasn't a single. Yep, there wasn't. It went straight to Zahid Mahmood. It's a big day for Abrar Ahmed, being selected for Pakistan national side to play against England. Such a nice, humble guy that he will definitely give flavour to Pakistan's bowling attack with his mystery spin bowling. It's one for the future. He's bowled a quick one. 4 gone, 25 for 1.
25 पे 1, 4 ओवरों के बाद थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ना शुरू किया है सेंट्रल पंजाब ने। आसिफ महमूद पिछले मैच में हैट्रिक की थी इन्होंने और शानदार बैटिंग जिसकी वजह से सिंध जीत हासिल करने में कामयाब हुआ। इस बार बोल्ड हो गए, ज्यादा जोर से हिट करने के लिए गए फैजान, इनसाइड एज और प्लेड ऑन, और पिछले मैच में हैट्रिक की आसिफ महमूद ने और वहीं से उन्होंने बॉलिंग शुरू की है इस मुकाबले में भी। खराब शॉट था ये, आउटसाइड ऑफ स्टंप था काफी और जबरदस्ती की ये शॉट लेग साइड पे खेलने चले गए। अगर ऑफ साइड पे खेलते तो कामयाबी जरूर हासिल होती, लेकिन कामयाबी मिली है आसिफ को और एक और झटका सेंट्रल पंजाब को। मोहम्मद फैजान 7 रन बना के वापस 25 पे 2 सीपी। सेंट्रल पंजाब के सबसे कामयाब बैट्समैन, इस टूर्नामेंट के सबसे कामयाब बैट्समैन दरअसल तैयब ताहिर, उनको मैदान में पहुंचना पड़ा है। आसिफ महमूद जिनको सुहेल खान को हटाकर लाया गया था मीडिया सेंटर एंड से बॉलिंग करने के लिए, उन्होंने अपनी पहली गेंद पर शिकार किया और बहुत बड़ा दर्द-ए-सर सेंट्रल पंजाब के लिए ये पावर प्ले खेलना रहा है, जिसको किसी हद तक कम किया था मोहम्मद फैजान ने, लेकिन आज वो सिर्फ 7 रन बना सके। ऑन द अप खेलने की कोशिश में वो आउट हुए क्योंकि विकेट ज्यादा स्लो है, ये वाइड हो जाएगी। अच्छी विकेट कीपिंग सरफराज अहमद की। आशना है ऐसी सिचुएशन से तैयब ताहिर, मुश्किलात का सामना जरूर रहा है लेकिन परफॉर्म करते रहे। शॉट सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आई, हर शॉट को ये लेग साइड प्रेफर करते हैं, बहुत दूर था गेंद और अगर बेहतर होता अगर ये ऑफ साइड पे खेलने जाते, लेंथ थोड़ी सी पीछे होती तो आप मैनेज कर जाते हैं, लेकिन लेग साइड पे रह के हार्ड लेंथ नहीं। अच्छी लेंथ है बॉलिंग करने के लिए। आसिफ महमूद की रफ्तार के बारे में हम जान चुके हैं कि वो अच्छी खासी है, काफ़ी कदावर भी हैं और इस पिच के बिल्कुल रवैये के मुताबिक और इस पिच की ज़रूरत के मुताबिक अब तक बॉलिंग कर रहे हैं। ये हैदराबाद के खिलाड़ी हैं आसिफ महमूद, और हैदराबाद में पायलट क्रिकेट एकेडमी है, जो इनके कोच हैं असगर पायलट, एक बड़े मशहूर हैदराबाद के अंपायर गुजरे हैं, अकबर खान, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। तो ये और यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई, सुहेल खान ने, उनको शायद इस मैदान की आउटफील्ड से शिकायत है, हालांकि उन्होंने खुद नजरें हटा ली थी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फील्डिंग थी, ज्यादा रफ्तार थी भी नहीं, अच्छा मैनेज किया एंड में तैयब ताहिर ने। अंदर आ रहा था गेंद, आखिरी लम्हात तक देखा, जो सिंगल होना चाहिए था, थोड़ा सा लेट जरूर हुए लेकिन फिर भी पहुंच गए थे गेंद पे, बिल्कुल टांगों के दरमियान से चौका हुआ। ये अच्छी फील्डिंग नहीं है। एक और वाइड गेंद, इस ओवर में मूवमेंट मौजूद है। यहाँ सुहेल खान गेंद को मूव करा रहे थे, आसिफ महमूद को भी मदद मिल रही है, लेकिन उनकी लाइन ज्यादा अभी तक बेहतर नहीं रही। आसिफ महमूद पिछले मैच में ये मैन ऑफ द मैच थे, इन्होंने हैट्रिक करने के अलावा उस मैच को बैटिंग से भी फिनिश किया, बड़े बड़े छक्के लगाए। राय पाकिस्तान ने इंतखाब किया आमिर जमाल का इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए। आइंदा कुछ वर्षों में, कुछ टूर्नामेंट्स के बाद आसिफ महमूद भी जो है ये पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स के उम्मीदवारों में से एक होंगे। इनका मुस्तकबिल खासा रोशन लगता है अगर
यूं ही मेहनत करते रहें। अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। पहले बॉलिंग से इंप्रेस किया, लेकिन जिस तरह बैटिंग की, काफी मैच्योर बैटिंग थी वो। जारहाना भी ज्यादा लंबा रनअप नहीं है और रनअप में ज्यादा तेज दौड़ते भी नहीं है। उन बॉलर्स में से एक लगते हैं जो अपनी जो स्पीड है वो गैदर करते हैं बॉलिंग क्रीज में पहुंचकर अपने कंधे का जोर लगाकर। कंधे का जोर और कलाई का जोर भी इनके पास है। उसका कुछ इन्होंने डिस्प्ले बैटिंग में भी दिया था, काफी मुतासिर किया इन्होंने। या इस आखिरी गेंद पर ये हमला बोलने जाएंगे। अखलाक बाउंसर करने के लिए गए, खुद को गेंद की लाइन से हटाया। ये ख्याल बिल्कुल भी बुरा नहीं है बाउंसर करने का अखलाक पर, लेकिन लाइन को ध्यान में रखना होगा। अच्छी पेस के साथ कर रहे हैं, लेकिन एक्सिक्यूशन जो है वो फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे गेंद को। लेग साइड पे ज्यादा फिनिश हो रहा है, स्विंग मिल रहा है। अंडर लाइट्स हमने देखा है जितने भी मैचेस अभी तक खेले गए हैं, फास्ट बॉल्स को मदद जरूर हासिल हुई है। बहुत ही अच्छा इख्तिताम किया गुड लेंथ गेंद के साथ आसिफ महमूद ने। वाइड्स के अलावा ये अच्छा ओवर था, वाइड से हटकर 33 पर 2 सीपी। सेंट्रल पंजाब के दोनों ओपनर्स ज्यादा स्कोर कर नहीं पाए। अब्दुल्ला शफीक शानदार डिलीवरी थी सोहेल खान की, और मोहम्मद आसिफ ने बोल्ड किया मोहम्मद फिजान को 7 रन पे। जिम्मेदारी इन दोनों पे लागू है। तैयब ताहिर बहुत अच्छी फॉर्म में है, अखलाक भी थोड़ी सी फॉर्म अपनी वापस हासिल कर रहे हैं। इनके लिए बड़ा दिन है आज, पाकिस्तान टीम में इनकी शराकत हुई। यहाँ तो अबरार की जो नजरों में वो इंतजार की बेकली थी वो खत्म हो गई। आज सेलेक्टर्स ने इनको इंग्लैंड के खिलाफ टीम में शामिल करने का फैसला किया है। इनकी जिंदगी का, इनके क्रिकेट करियर का आज सबसे बड़ा दिन है, इसमें कोई शुबा नहीं। आपकी जब मेहनत रंग लाती है, आपकी शब और रोज की मेहनत, उसका सिला मिलता है। पिछले 2 बरस से इन्होंने बहुत मेहनत की है, ग्रेड 2 क्रिकेट से लेकर कायदे आजम ट्रॉफी तक। और शानदार शॉट खेला, इस बार थोड़ी जगह मिल गई थी ऑफ स्टंप के बाहर, और यही पसंद है तैयब ताहिर को। ये लेंथ ढूंढते हैं और बहुत ही तेज कदमों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्दी पिक कर लिया था, थोड़ा सा पिछला पैर ऑफ साइड पे गया और रूम बनाया, इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, लेकिन बहुत स्विफ्ट मूवमेंट है इनकी। सऊद शकील बहुत आगे खड़े हैं एक्स्ट्रा कवर पे, इसलिए हल्का सा भी गेंद इधर उधर जाए तो वो चौका ही होगा। यहाँ फ्लाइट से भी जान लिया था कि गेंद ऑफ स्पिन होने वाली है, और ये भी जानते हैं कि इस पिच पर आज बहुत ज़्यादा टर्न नहीं है। आप खेल सकते हैं अगेंस्ट द टर्न भी। बॉलर के लिए अपनी रफ्तार को और अपनी लेंथ को वेरी करना बहुत ज़रूरी है स्पिनर के लिए इस पिच पर। तैयब ताहिर की खास बात यह कि बहुत लेट मूवमेंट करते हैं, तेज जरूर है लेकिन रीड कर लेते हैं कि लेंथ कहाँ गिर रही है। बैकफुट पे आसान नहीं होता, स्पेशली इब्रार जैसे स्पिनर्स पे पीछे जाना। पर यहाँ 2 रन बनने चाहिए थे, लेकिन थोड़ी सी सुस्त रवि का मुजाहरा किया अखलाक ने। छः 6.88 इस वक्त रन औसत है, और एक पार्टनरशिप दरकार है सेंट्रल पंजाब को। और शानदार शॉट ऑफ द बैकफुट, यही खासा है। और कितनी बार तैयब ने ये कर दिखाया है इस टूर्नामेंट में, बैकफुट पर कट शॉट खेलना उसमें ये यगाना है।
बहुत कमांड हासिल है इनको। ये देखें, फिर हल्की सी मूवमेंट की बैकफुट पे, रीड किया लेंथ को जल्दी, और शानदार टाइमिंग, बिल्कुल मौका नहीं था। इब्रार जरूर स्ट्रगल कर रहे हैं तैयब ताहिर के खिलाफ, क्योंकि ये लेंथ अमूमन दूसरे बैटर्स पे चल जाती है, लेकिन इनका फुटवर्क और इनकी आई बहुत अच्छी है। और उठाकर खेल दिया मिड ऑन के फील्डर, गेंद के नीचे आने के लिए कोशिश हैं, लेकिन ये इन्हें पीछे छोड़ती गई कोशिश के यहाँ पर 100 में से 100 नंबर मिलेंगे आसिफ को, लेकिन गेंद के साथ वो बाहर चले गए। क्या ये छक्का शुमार होगा? क्योंकि गेंद इनके हाथ में ही रही है, नीचे नहीं लगी, तो ये 6 रन ही बन जाएंगे। बहुत जोरों पर लगे इस ओवर में तैयब ताहिर। 6 ओवर्स मुकम्मल हुए, 49 पर 2। हल्की सी एयर दी थी इस बार इब्रार अहमद ने, और ये शानदार एफर्ट थी, कैच कर भी लिया था, लेकिन डाइव जब मारी तो बाउंड्री के पार जाके गिरे। कमिटमेंट के आपको जरूर तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छे एथलीट खुद को साबित कर रहे हैं। बैटिंग और बॉलिंग के बाद उन्होंने दिखाया है कि उनकी में फील्डिंग में भी कितनी अहलियत मौजूद है। आसिफ महमूद में दलेराना शॉट था और अच्छी क्रिकेट देखने में आई। दलेराना बॉलिंग भी, पावर प्ले में ही 2 गेंदों पे फ्लाइट दी अबरार अहमद ने। वो विकेट दरअसल खरीदना चाहते हैं। बोला मुदस्सिर लेफ्ट आर्म सीम बॉलिंग करने को है। उनका पहला ओवर अच्छा खासा रहा। होल शॉट और गेंद सीधी गई हाथों में, और इस कैच का जवाब नहीं। फराज अली थे जिन्होंने ये लो कैच लिया। गेंद बड़ी तेज से ट्रेवल करती हुई आई थी और इसे जमीन पर नहीं रख सके अखलाक। फील्डर मौजूद था इस शॉट के लिए, और गुलाम मुदस्सिर ने अच्छी पेस के साथ ये हिट लेंथ को हिट किया, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए अखलाक। ये शॉट ना जमीन की तरफ थी, ना इतनी एलिवेशन थी, सीधा हाथों में खेल दिया। अच्छा जज किया था कैच। बहुत ज्यादा नाराज जरूर रहे हैं इस बार, खुशी मना रहे हैं अपनी। अखलाक ज्यादा बड़ा स्कोर कर नहीं पाए, 19 बना के वापस 49 पे 3 सेंट्रल पंजाब। शुएब मलिक के लिए ये सूरत हाल नई नहीं है। 49 पर 3, और अब इन्हें मिडल ओवर्स के चैलेंज से निपटना है। 11,000 से ज्यादा रन बनाए हुए हैं, 72 मिस सेंचुरियां जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड है। अच्छा स्ट्राइक रेट है, कुछ सेंचुरी नहीं है, लेकिन जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं आपको सेंचुरी के मौके मिलते भी नहीं है। अभी विराट कोहली ने अपनी पहली T20 सेंचुरी बनाई इतने बरसों के बाद। हालांकि वन डाउन बैटिंग करते हैं मलिक से पहले। वैसे तो मरीना इस खेल में उस सेंचुरी की बहुत अहमियत होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये ओपनर्स ज्यादा सेंचुरी बनाते हैं। पुल करने के लिए गए, शायद ज्यादा स्कोर के पीछे खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद को जमीन पर नहीं रख सके। ये शैडो शॉट में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये करना चाहिए था अखलाक को। गेंद आया बहुत तेजी से था, अच्छा बॉल कराया था गुलाम मुदस्सिर ने।
इनका एक्शन भी थोड़ा सा डिसीविंग हो सकता है गुलाम मुदस्सिर का। अभी तक जो सिंध का दासा रहा है, यहाँ पहुंचकर मुल्तान में रावलपिंडी से पहले मैच में उन्हें नॉर्दर्न के हाथों 1 रन से शिकस्त हो गई थी जब फराज आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए। उसके बाद से ये नाइट क्रिकेट उनको ज़्यादा रास आई है। सेंट्रल पंजाब ने 50 रन अपने हासिल कर लिए। तो नाइट मैचों में उनका यही टेम्पलेट रहा है, वो पहले बॉलिंग करते हैं और उसके बाद रन चेज करने के लिए जाते हैं। रात के वक्त गेंद बेहतर बल्ले पर आती है। पहले मैच में शर्जील ने बैटिंग की, दूसरे मैच में मिलजुल कर इनकी टीम ने रन्स बना लिए। नाइट मैच जितने भी मैचेस हुए हमने देखा है कि बैटिंग जो है वो कदरे आसान हो जाती है। अच्छा बल्ले पे गेंद आना शुरू होता है। और सिंध इस तरह सऊद शकील हर बार ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है। इनके अगर बैटिंग लाइनअप में देखें तो टेम्परामेंट भी कुछ ऐसा ही है ओपनर्स का, मिडिल ऑर्डर का, कि अगर हदफ उनके सामने हो तो फिर वो ज़्यादा कैलकुलेट करके खेलते हैं। शर्जील ने तो नाकाबिले यकीन इनिंग्स खेली थी उस दिन, शानदार हिटिंग की थी उन्होंने। ये अच्छी बैटिंग पिच है। पहले मैच में 170 रन का हदफ हासिल हो गया था मैच के आखिरी ओवर में। और अब तक सेंट्रल पंजाब के जो बैट्समैन है विकेटें गंवाने के बावजूद गेंद बल्ले पर आ रही है। सेंट्रल पंजाब को ये डू एंड डाई वाला मैच है उनके लिए, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर कूच करने वाला मामला है। अच्छा पुल शॉट, लेकिन रन एक ही मिलेगा। गुलाम मुदस्सिर ने अच्छी बॉलिंग की, बिल्कुल खुल खेलने का मौका नहीं दिया सीपी को इस ओवर में। 52 पर 3। पावर प्ले का अहवाल, ये आउटस्विंग डिलीवरी थी लेकिन इनसाइड एज हुए अब्दुल्ला, और ये दूसरा झटका लगने को ही था लेकिन शर्जील लेट हो गए थे इस पे। तो अच्छी शॉट्स देखने को जरूर मिली हमें। अच्छा टाइम भी किया, इब्रार को आड़े हाथों लिया बैटर्स ने। ये इनसाइड एज आसिफ की पहली डिलीवरी पे। तैयब ताहिर ने जो है वो अपनी फॉर्म जारी रखी हुई है सेंट्रल पंजाब के लिए, और ये पार्टनरशिप बहुत अहम होगी। रन्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। विकेट्स का कॉलम थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन ये दोनों पार्टनरशिप अगर बनाने में कामयाब होते हैं तो ज़रूर एक अच्छे हदफ तक पहुंच सकेंगे। बैटिंग काफ़ी मौजूद है उनके पास। जाहिद महमूद लेग स्पिन बॉलिंग करने के लिए उनको बुला लिया गया पवेलियन एंड से। इसको हम इंज़िमामुल हक पवेलियन एंड भी कहते हैं। तो देखना ये कि ये आज किस रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, क्योंकि अभी तक इन तेज बॉलिंग करने की ज़्यादा कोशिश की नहीं। यहाँ मुल्तान में इनकी जो रफ्तार है वो ज़्यादातर यही देखी गई है, वो 80 से कम रही है यहाँ। और ये पुल शॉट, ये बिल्कुल भी अच्छी गेंद नहीं थी और शोएब मलिक टूट कर पड़े इस पर और 4 रन आ गए। स्पिन को बहुत कंट्रोल से खेलते हैं, ये जल्दी रीड कर लेते हैं, लेंथ चुके रहते हैं। एंड टाइम पे इन्होंने बैक फुट पे रॉक किया, और इस तरह की लेंथ अगर आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को देंगे तो अंजाम यही होगा। यहाँ स्पिनर्स जो हैं उनकी जिंदगी अजीरन किए रखेंगे। शोएब मलिक ये जब तक रहेंगे, और यहाँ सिंध की यही कोशिश होगी। ये देखिए कितना आला फुटवर्क, क्रीज में डीप गए और गैप ढूंढने में भी उनको मलका हासिल है। अच्छी डिलीवरी, तकरीबन एस की शक्ल दे दी थी जाहिद ने तैयब को। स्क्वायर ऑन कर दिया था इन्होंने। अच्छी रफ्तार में ये रद्दोबदल करते हैं। देखें लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे लेकिन हल्का सा स्पिन हुआ।
अच्छा खेलते हैं स्पिन को तैयब ताहिर भी, खास तौर पर बैकफुट पे, खास तौर पर ये कट और पुल शॉट खेलते हैं। उसको देखकर कभी कभार महेंद्र सिंह धोनी की याद आ जाती है, जितने जोर से ये कट शॉट आज भी उन्होंने लगाया था अबरार अहमद को।
अब समझते हैं कि किस मरहले पर फास्ट बॉलर को बाउंसर करना चाहिए, क्योंकि एक ही बाउंसर आप कर सकते हैं इस तर्ज में। लेकिन कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि तीसरा या चौथा गेंद जो है वो आप बाउंसर के लिए जाएं, उसके बाद आपके पास गेंदें मौजूद होती हैं जिस पे आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वही आप वाली बात, अगर आप एक अच्छा हथियार ओवर के स्टार्ट में ही आप ज़ाया कर देंगे, क्योंकि हो सकता है पहली गेंद पे या दूसरी गेंद पे अगर आप उसको ख़त्म कर देते हैं तो फिर वही आपकी बात कि आपको आगे लेंथ गिरानी पड़ती है। तो ये मिक्सअप करना, और एक और बात ये होती है कि बैटर जिस तरह का है वो फ्रंट फुट पे अगर कंफर्टेबल है। उम्दा फुल शॉट, लाजवाब बैट स्पीड थी कासिम अकरम। आज नीचा दिखा रहे हैं तमाम ही बॉलर्स को, इस शॉर्ट गेंद को भी उन्होंने रौंद के रख दिया। यही बात मैं करना चाह रही थी कि बल्लेबाज के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। आप उन बल्लेबाजों को जो बैकफुट पे अच्छे हैं, अगर यहाँ लेंथ कराएंगे तो चाहे आप पहला गेंद कराएं या आखिरी, आपको चौका ही पड़ेगा। ये रीड करना एज ए बॉलर बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत से हथियार हैं जहां तक इनकी बैटिंग का ताल्लुक है। कासिम अकरम की कट करते हैं, पुल करते हैं, एक और शानदार ये स्कोर कट है, इस पर भी 4 रन बन जाएंगे। विकेट के दोनों जानिब इस वक्त खुल खेल रहे हैं सेंट्रल पंजाब के कप्तान। कमाल बैटिंग है कासिम अकरम की, बहुत अच्छी तरह रेंथ को लीड कर रहे हैं। बैलेंस देखें आप, पिछली टांग इनकी कोलैप्स की क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं मिला था, लेकिन नज़र रखी गेंद पे, बिल्कुल मौका नहीं मिला पॉइंट के फील्डर को। दोनों जानिब रन खा रहे हैं गुलाम मुदस्सिर, और ये कोई अच्छा इशारा नहीं है सिंध के लिए। विकेट हासिल करना बहुत जरूरी है। गुलाम मुदस्सिर ने इस ओवर से पहले तक अच्छी बॉलिंग की थी, एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर वो 13 रन दिए जाते हैं, 123 पर 5। सिंध आज कुछ मुश्किलात के घेरे में जरूर रहा है, कई जगहों पे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई और नहले पे दैला फील्डिंग आज मेयार के बिल्कुल भी मुताबिक नहीं। पहला ड्रॉप, उसके बाद ओवरथ्रो के रन मिलते रहे, या के बाद दीगरे, ये बहुत बड़ा सेंट्रल पंजाब का फ़ायदा रहा। देखिए ग्राउंड फील्डिंग भी आज बिल्कुल भी मेयार पे नहीं थी। जब आप छोटा फॉर्मेट खेल रहे हो, एक चांस किसी बल्लेबाज को देना महंगा पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस के बाद रन्स देते रहना सिंध के लिए अच्छी निशानी नहीं है अगर वो टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं। उनसठ रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद जो है जवाबी हमला वो मंसूबा कामयाब रहा है तक सेंट्रल पंजाब का। फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इस वक्त रिसीविंग एंड पर हैं। सुहेल खान वापस आ गया है जो विकेट टेकर हैं, क्योंकि इस पार्टनरशिप को गिराना बहुत ज़रूरी होगा। आमिर यामीन भी ऐसे बैट्समैन हैं जो आगे चलकर शॉट खेल सकते हैं। सिंध बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सकता सेंट्रल पंजाब को। एक ये फ़ायदा ज़रूर रहा है कि जीतता है सिंध चेस करके भी, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम टारगेट पे आउट करें। उठाकर खेला, जैसे गेंद गैराबाद जगह पर गिरी और दूसरा रन यहाँ पर नहीं बन सकता था। वापस जाना चाहते थे आमिर यामीन बैटिंग एंड पर, उठा के शॉट खेलना चाह रहे थे, शायद लेग साइड पे फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन मिडल नहीं कर पाए और खुशकिस्मत रहे इस मौके पर। हेलीकॉप्टर शॉट खेलना पसंद करते हैं आमिर यामीन, लेकिन पूरी तरह इनकी जो कलाई है वो चल नहीं सकी। कासिम अकरम एक स्ट्रोक के फासले पर हैं अपनी निस सेंचुरी से। एक और शानदार शॉट और फील्डर बेबस रहे। यहाँ दौड़ते हुए आए थे बहुत तेजी के साथ जाहिद महमूद, और इस चौके के साथ ही ये 50 रन मुकम्मल कर लिए। कप्तान की इनिंग्स खेली है कासिम अकरम ने और अपनी टीम को दबाव से छुटकारा दिलाया है। काबिल तारीफ बैटिंग, लाजवाब बैटिंग है। कैप्टन नॉक खेली है, मुश्किल टाइम पे आए थे, लेकिन जिस तरह की इंटेंशन से बैटिंग की, ये रन्स और ये डिजर्व करते थे 50। रफ्तार तेज थी जाहिद महमूद की, लेकिन टांगों के बीच में से एक और चौका करवाए। सिंध की फील्डिंग
बहुत ही मेयार के नीचे रही, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इनको। जिस तरह से जारहाना बैटिंग इन्होंने की, अभी इनका काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन दिलकश स्ट्रोक्स देखने को मिले। पुल किया, गेंद हाथों में हो, जी हाँ, सीधी हाथों में चली गई। इस बार ये बड़ी बाउंड्री की तरफ शॉट खेलने गए थे, लेकिन सही तरह टाइम नहीं कर सके, ना एलिवेशन मिली ना फासला, और इस तरह सुहेल खान को वापस लाने का फैसला ये सही रहा। कासिम अकरम की उन्होंने इनामी विकेट हासिल कर ली। शॉट बड़ी लगाना चाह रहे थे, लेकिन ये बाउंड्री भी बड़ी है, ज़्यादा एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए। थोड़ा सा गेंद हल्की पेस से किया था, लेकिन खुश होंगे, अच्छी बैटिंग फॉर्म में लगे और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया आज। 51 बना के कप्तान वापस कासिम अकरम, सेंट्रल पंजाब 129, 6 खिलाड़ी आउट। सामा मीर बैटिंग में काफ़ी हैंडी साबित होंगे आमिर यामीन के साथ। अब रोल आमिर यामीन को यहाँ ज़्यादा निभाना पड़ेगा। अच्छी पार्टनरशिप बन गई थी सेंट्रल पंजाब की, कासिम अकरम अच्छी इनिंग्स खेल के गए, लेकिन ये मोमेंटम जारी रखना बहुत ज़रूरी है सेंट्रल पंजाब के लिए। अंपायर ने मुतला किया है कि राइट आर्म ओवर द विकेट आएंगे सुहेल तनवीर उसामा मीर को, सुहेल खान राधा। रिवर्स स्विंग करने की कोशिश की और उसामा जो हैं वो भी पहली गेंद से ये वार करने के मूड में। आज सेंट्रल पंजाब ने शायद ये सोचा समझा, उनका मंसूबा है कि विकेटें खा गिरती रहें, लेकिन वो रन्स बनाने से बाज नहीं आएंगे। यह छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री से बहुत ही पहले काम तमाम हो गया। गेंद को आने भी दिया अपने करीब, इसकी वजह से वो एलिवेशन और डिस्टेंस नहीं हासिल कर पाए। अगर ये आगे से पकड़ते, बेस भी थोड़ी स्टेबल रहती, तो शायद ये छक्का जाता। सुहेल खान की दूसरी विकेट। पुल करने के लिए गए, बाहरी किनारे को लगी और बहुत फाइन चली गई। शर्जील खान जो है उनने देर कर दी। सुहेल खान के ओवर में विकेट आई और साथ साथ 10 रन भी, 133 पर 6। $133 for 6. Excellent knock from skipper Kasim Akram. 51 of 26. Stage is set for the big finish. Single Abrar is coming back into the attack. Well, his call up to the side. Too good for him just now, but this is the boundary of the last delivery. Swinging hard, and Sharjeel struggling. Sama Mir giving it the almighty swing. Ali Yunus, what's a good total here from here on in? Well, at the moment, Central should feel lucky that if they can get to 160 from here on, it would be a good total. Knocked it down. The senior pro, Sohail Khan. Yeah, but the problem is they've lost too many wickets. Amir Yamin, the all-round cricketer,
All eyes would be on him from how he takes this inning along till the end. He hasn't got it cleanly. Safi Sarfraz gets underneath it. He takes the catch. They were all calling his name, and he was the one who got there first with the gloves on. Abrar breaks through. Yeah, again, too many shots. There's still 3 overs to go, and Sam Mir thought that he's going to finish it in 1 over. And the very serious looking Sarfaraz Ahmed, he means business today. Samamir gone for 5. Central Punjab 136 for 7. You see the looks? Very serious. That's not the Sarfaraz we know. Say something, speak up, it's all right. You're at the top of the table, Sindh side. I have never seen him so quiet. And I can understand. He was real close to the call-up. He's had a good championship here. But he missed out narrowly. But his side here in this competition is the table topper. Plenty to play for them here. I don't like this Sarfaraz. Trust me, I like him speaking, chirping. I think all of us like the Sarfaraz that we know. Such a character, such a fighter, a street fighter. Great servant to Pakistan cricket over the years. Ahmed Daniel, best of 6. Wouldn't send any shivers down the spine of any bowling lineup. 137 for 7. Again, no thought process. What was he trying to do? Even if he's looking to play towards mid-wicket, you got to cover the line. You gave himself room, just hang your back on it. You were bound to get out, and probably that is what Sohail Khan is suggesting. What are you doing? Smile, Sarfaraz, smile, please. Excellent finish from Abrar. 1 for 31 in his return. On the day, he got a call-up for the national side. 2 for 24 for Sohail Khan, bowling his last over. Amir Yamin is the key, but look at his strike rate. 7 of 13 deliveries. He's the key here. He would like to face most of those 18 deliveries. Yeah, seems like Ahmed Daniel is having some issue. Ehsan Raza with the non-striker end he is at. Amir Yamin, what can he do? 3 overs, 18 deliveries. Still not happy, Ahmed Daniel. Probably some bug in his eye. That's what Ehsan Raza is checking. Oh, wow. High full toss, the slower one, all went wrong. But Amir Yamin capitalized, he got a boundary, and he'll get another chance to have a go at Sohail Khan, because it will be a free hit. Yeah, the slower one, the back of the hand delivery he was trying to bowl. Look at that. If you don't execute it rightly, it's always going to go for runs. And a full toss, juicy full toss towards leg side, it's always going for runs. Central Punjab will really take the gift because very little batting line left. Free hit coming up. Just a little bit of tail in, went between the legs of Amir Yamin. Splendid piece of bowling. Yeah, are we witnessing some reverse swing from Sohail Khan? It suggests the last delivery. Stride going through, look at that. Maybe that late swing. We know Sohail Khan is an excellent exponent of that reverse swing.
we were out there. The surface, the square is pretty abrasive. We saw some swing in the first game as well. That ball is tailing in. Fine leg up in the ring. Got to be precise with his lines. Short and wide. Amir Yamin carted him away for 4. Very indifferent from Sohail Khan. Again, the fielder of third inside. And you ball a gentle length delivery outside the off stump to somebody like Amir Yamin, who's very skillful. He likes this area. And once he goes in that area, it's always going to be 4. So Amir Yamin, you got a feeling that Sindh has given away lots of extra runs, courtesy to some average bowling and poor fielding. Indeed, we were just praising how good Sohail Khan's previous delivery was. And then a nothing delivery. Huge over already. Beats the mid off. No. Asif Mahmood, he's a very, very good athlete. Absolutely. I just love this boy's energy. Asif Mahmood bats well, bowls excellently, fields marvelously well. Here's another example. It was hit hard. Look at that. He was quick to start. That energy that he brings, wonderful. Remember the effort he made earlier in the inning. Although he could not get the wicket, could not get the catch, but that was an excellent effort. You need such characters in the game. Once again, length allowed him to get underneath. Saad Khan is the culprit on that occasion. What is going on? This fielding standards have really slipped in the second half of this competition. Today has been probably one of the worst. It was a good effort though, always dipping on it, but the standard Saad Khan sets for himself, he should have taken it. And we know that these youngsters, they are very good fielders, very athletic, very fit cricketers. So you expect them to take these catches. Saud Shakil, just speechless it seems. Little helicopter flick. Call is for 2. 2 it is. Beg your pardon, it was Ahmed Danial bringing out the helicopter. Expensive over once again. Central Punjab, this partnership is really propelling the score quickly. I like it. That helicopter, that flick. Yeah, the Saad in the background, he was quick to react. He was expecting it most likely. 15th the partnership. 150 up for Central Punjab. Sindh would not like it. Because in my opinion, they've just probably 15 runs extra. Once again a length delivery. This time it may carry to third man. Yes, it does. Sharjeel Khan has been indifferent over from Sohail Khan. He'll take the wicket. Ahmed Danial batting at number 9. Not much prodigy with the bat. And really succumbs under pressure, chasing some big runs. No mistakes this time. Such a trier he is. No matter how many runs he gives away in 1 over, he will always try to get wickets. That is what he has done. Ahmed Danial could only manage 4 runs. It's 151 for 8. Number 10, Hunain Shah. Ali Aspand, who batted at number 6 yesterday, has now become number 11. Still time to go, 12 deliveries. It's a lot of balls in this format. This is Asif Mahmood finishing off from the media centre end. Up and over. Short and wide, asking for trouble.
And Amir Yamin is adding valuable runs here for Central Punjab. Not learning Sindh side. Again, the fielder of third inside the circle. You ball it length delivery outside the off stump. This is not the first time that Amir Yamin has hit it there, right in that area. That is ordinary cricket by Sindh side. If you're going to ball it there, you have that fielder third back at the boundary line. You might save some runs. No change in the field. Keep it up, keep it pulled. You got the straight boundaries protected. Ask Amir Yamin to hit you down the ground. And that's the last wicket. One thing's sure, central batters, whoever has come, they've looked to attack. And that is what Ahmed Daniel was looking at. That would have been a better shot that he attempted in that shadow practice. Sohail Khan is a trier. Mid-off is up in the ring now. They've sent third man back, Ali. Saud Shakil is listening to you. Knocked him over. Full and straight. They're not going to stay. One thing is for sure, these central batters, they're going after every delivery. Yunan Shah facing his first delivery, length delivery. Just went after it. You got Amir Yamin. Yeah, look at that expressions from Amir Yamin. He was disappointed that this was not the right shot to play because he's there. You got to give the strike to Amir Yamin. Gone without scoring. It's 156 for 9. With 10 deliveries left, and you have a set batter on the other side. Hunain really played an irresponsible stroke. Now, Ali Asman at number 11. He batted at number 6 in the last innings. Chance! Oh, what is going on? This is sloppy cricket. This is not on. Seems like they just don't want to play out the 20 overs. Had Ibrar collected it, even now, it would have been gone by miles. But that throw was a nothing throw. He wasn't trying to hit the stumps. He wasn't giving it to Asif. He's thinking about that green shirt he's going to wear, Ibrar Ahmed. Well, he almost yoked his partner. That landed on the toes of Asim Mahmood. I'm absolutely speechless. Lost for words to explain this. They're trying too hard, Asim Mahmood. This is how Hunain lost his wicket. There was no point, there was no need of this shot. When Amir Yamin is there with you on this other end, just take a single, give the strike back to him. Come on. Just the basics. Amir. Get a single. Ali Asman, he'll do better to just keep that delivery out and allow Amir Yamin to face the last 6 deliveries. They get up to 170, they can still make a game out of it. Sindh could have restricted Central Punjab to a lot less than what's on the board already. Amir Yamin has refused the single. 19 gone, 159 for 9.
I'm learning this. I'm learning this step. Can you teach me? Because you're good at it. You got the moves, Ali. I can tell you this much. Yeah, you can do it. There you go. You don't need to learn it. You've mastered it already. Just love it. Good energy from the crowd. It's grown throughout the evening at Fazal Mahmood enclosure. There's plenty of fans in there making a lot of noise. Expecting more and more crowds as we head into the weekend. Final 6 deliveries of Central Punjab. Ghulam Mudassir starts off with a white. It's pretty ordinary stuff from Sindh. As you just said earlier, they should have restricted Central Punjab to a lot less. But they just gave away too many runs in form of overthrows, extras, drop catches. They've been pretty ordinary. So if they lose this game, they cannot blame anyone but themselves. 7 wides and a no ball to go with countless errors in the field. Give credit to Saud, he's looking pretty calm. Haven't seen him flustered. He's always calm. Even at the toss, he's very calm. Extra calm. Cool as a cucumber. His heart is pumping. Squeeze it out. Amir Yamin is calling for 2. Chance at the non-striker end. Once again, a poor return from the deep. Now, Saim Ayub, one of the better fielders around. But it was always going to be 2. It was hit right in between those 2 fielders. Amir Yamin knew it. He ran the first one hard. Ali Asfan waited for the call, and a throw, better throw, might have put him in danger. And also look where Ghulam Mudassir picked up that throw. Straight down the ground, knocks the stumps at the other end. They say play straight, don't play too straight. He's showing no trust at all at Ali Asfan. This boy played at number 6 in the last game, and he's denying the singles also. That is, I don't know if that is the type of cricket you want to play. Denying the singles to somebody like Ali Asfan who can play. We saw that. Cracked it in the gap, screaming away to the boundary. Fantastic cricket. He denied the single for this. Superbly hit right between the 2 fielders. Boundary. Width on offer. Found the gap to perfection. The sweeper was only 10 or so yards away, but couldn't make it. Look at the power. Big flourish after he struck that one. Amir Yamin is very capable bat. Make no mistake. Getting a bit too cute, and the finger has gone up. Ghulam Mudassir celebrates. Amir Yamin, why would you do that? And Sarfraz knew it, knew something, because Amir Yamin is suggesting that my bat hit the turf. But Ahsan Raza, one of the good umpires around, decided that he's out. And that is the end of a good inning by Amir Yamin. A little cameo in the end. Scored 28 runs. Look at that. I don't know. did you hear anything? Ahsan Raza did. Sarfraz was never in doubt. Amir Yamin wasn't sure. But it will read caught Sarfraz bowled Ghulam Mudassir in the book. And Sindh has bowled out Central Punjab for 166. "15 runs extra in my opinion. But Sindh would require 167 runs to win of their allotted 20 overs. Crowd have loved this game. Why not? They've been thoroughly entertained by a wonderful inning by Qasim Akram. Scored 51 runs of 26 deliveries. Have a look at that scorecard. Tayyib Tahir, the man in form, 34 of 21.
Amir Yamin in the end playing a cameo 28, but Qasim Akram's inning probably was the decider. He came at a time when the team was in trouble, took them out of it, and at a good rate. Look at this delivery, just 20. Since bowling was indifferent. Sohail Khan amongst the wickets once again, 3 for 38, 2 for 24 for Ghulam Mudassir. Probably he was the pick. Asif 2 for 36 and Abrar 1 for 31. Plenty of errors in the field, but despite all that, Sindh's bowlers really stuck at it and bowled out Central Punjab for 166. It all started off Central Punjab needing to win both their remaining games to stay in the competition, and the start wasn't good. Abdullah Shafiq played on, a little bit of movement from Sohail Khan, got his inside edge. That is the start of something that we saw regularly throughout the innings. Good strokes in between. Faizan and Akhlaq went through the power play, took Abrar on earlier on. But then once again another soft dismissal. Tayyib Tahir has looked good, but poor fielding continued. Abrar's first spell went for plenty. That was a good one for once. Saim Ayub. Shoaib Malik came in and Shoaib Malik went very unfortunate way. Look at it, how it hit the back of the bat to allow Asif Mahmood to pick up the ball. But Asif Mahmood's throw was bullseye. Probably shot of the day. Then it was up to Amir Yamin. After that, Tayyib Tahir, oh look at that for a shot, that flick of the wrist. Wonderful touch he is in. He can do no wrong today. In fact, the whole tournament. Look at the power, but straight to South Shakil, who made no mistake, finally took a catch. And then in the last few overs, it was all Amir Yamin for Central Punjab and Qasim Akram's partnership. It was a brilliant one. He was not scared. A very, very brave inning from the captain. At a time when the team needed it the most, he has delivered. In a match they must win, it is a very, very good inning by the skipper. He played all round until he found the fielder there at mid-wicket. Samamir, after that, they just went after the bowling. Went after almost every delivery they faced. It was well caught by Sarfaraz, very serious Sarfaraz. In the end, Amir Yamin was helped by some average bowling by Sohail Khan and some average field placing also by South Shakil. Ahmed Danial tried few tricks, got a chance also, but not for too long. He lost his wicket, courtesy a good catch by Shajil. The last over, Amir Yamin continued. This was Hunain Shah, just went bizarre. This was how Amir Yamin went. Very unlucky way to get out. So now Sindh needs 167 runs of 20 deliveries. We're going to take a breather. We'll see you in a short while.
Hello and welcome back to the Multan Cricket Stadium. Let's have a look at the target. So Central Punjab asked to bat first in a match 26th of the National T20. 166 all out in 19.4 overs. 167 is the target that Sindh needs to get. Let's head down to Ali, who's got the man of the moment, Abrar, who's been named in the Pakistan squad. एक क्रिकेटर की ज़िंदगी में सबसे अहम दिन वो होता है जब उसको पाकिस्तान टीम की कॉल आती है और आज हमारे साथ एक ऐसे ही क्रिकेटर मौजूद हैं जिनको अभी पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल टीम की कॉल आई है इंग्लैंड सीरीज़ के खिलाफ। इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको वेल अर्नड सीट है आपकी पाकिस्तान टीम में। थैंक यू सो मच, आपकी मुबारकबाद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, और बहुत से लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह बस यही दुआ है कि परफॉर्म करूं जाके, और जब पाकिस्तान के लिए खेलूं तो अच्छा परफॉर्म करूं, बस यही दुआ है। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कहाँ से क्रिकेट शुरू की आप और किसको एडमायर करते थे, किसको देख के आपने ये मुश्किल आर्ट सीखा है? ये तो बस गली मोहल्ले में भाइयों के साथ खेल खेल के, रोडों पे खेल के, बस ये फिंगर स्पिन शुरू से टेप बॉल खेली है भाइयों के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अजिंता मेंडिस को देखा, तो बस आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह खेलता रहा और आज इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। और अब आप जब पाकिस्तान से खेलेंगे तो क्या डिफरेंट करेंगे? इंग्लिश साइड आ रही है, बड़ी टीम है, तो नर्व्स हैं, थोड़े परेशान हैं, घबराए हुए हैं? नहीं नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो आता है वही करना है इंशाल्लाह। जो शुरू से करता हुआ आ रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करना है। थोड़ा बॉलिंग की आपके बात करें, इस टूर्नामेंट में बहुत आपको डिफरेंट नज़र, बहुत कंट्रोल नज़र आया आपकी बॉलिंग में, तो ऑफ सीज़न में क्या प्रैक्टिस की आपने? ऑफ सीज़न में यही प्रैक्टिस की है कि अपनी लाइन और लेंथ को बेहतर रखूं, क्योंकि जब आप अच्छे एरिया पे बॉल पिच करते हो तो उसको हिट नहीं लगते, चाहे आपकी वो गुगली हो, लेग स्पिन हो या फ्लिपर हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए एरिया का, अच्छे एरिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया इब्रार, और हम दुआ गो हैं कि आप पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। या इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद थे और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान टीम इनकी सिलेक्शन हुई है इंग्लैंड सीरीज़ के ख़िलाफ़, तो हम चाहेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ओवर टू यू सिकंदर। Thank you so much, Ali, and well spoken by Abrar Ahmed. It's a big moment for him for sure. He's earned that place. He's bowled well in the National T20. He's been knocking that door. And if he gets that opportunity to be in the 11, he'll surely make full use of it. Sharjeel Khan is the man who opens for Sindh. He's been opening it for now quite a few years. He's had 100, the only 100 in this season. 107 not out. If he gets going, and I'll tell you what, if he can get a quick fire 30 even, he gets that start, that jump start that the side needs in a chase. You're not asking for 100 or anything. Just a quick fire 30. Saim Ayub can just enjoy in the shadow of that quick fire runs and then go on with his stroke play. Amir Yamin will bowl the new ball for Central Punjab. There will be one less. Irfan Khan Niaz is not there. If you're talking about that bowling 4 overs, he usually does bowl for them. And all set to go with one slip in position. Sharjeel Khan on strike, and surely he will not wait long until he tries to go for that big hit. Ball 1. Amir Yamin bowls at that right kind of pace for Sharjeel to go after. The only thing he needs to be wary of is that angle. Initially, Amir Yamin gets the ball to go away from the left-handers. Central Punjab, 166. Qasim Akram top scored. He really batted beautifully for his half-century. Sindh was sloppy in the field. Probably you'd say let 15-16 runs extra. But Central Punjab have something to bowl at if they can keep a couple of early wickets. What Amir Yamin will be looking for is just to mix it up a little bit against Sharjeel. 3 for Sohail Khan, 2 for Ghulam Mudassir and Nasif Mahmood. A wicket apiece for Abrar and Zahid. So all contributed with wickets. Yes, Sohail was a bit expensive there. So was Asif and Zahid.
was basically Qasim Akram's quick fire 50 that went and spoiled those figures a little. But still it's a gettable total, I tell you that. We've seen it has happened in the first game, in the afternoon, in the evening game. And now it's a great opportunity for both sides to show one can defend and one can chase. It didn't get up at all. You see where the keeper collects the ball. See Skiddy, Ahmed Yamin. This one went the other way. And under the bat of Sharjeel, he played over the top. Look at that wobble. Clark somehow managed to stop that one. He had a smile on his face. Clark is not a regular wicket keeper. He's really struggled behind the stumps. Well, he's lucky, he's happy because he'll play every game because he's keeping the stump. He's got the gloves. The other man who can also keep is very much a bowler for them, Faizan. Clark was once thought of very highly in this format with his wicket keeping being just an air to get him into the side. Top of the order, a basher. He's had a quiet time. This man has had a good time of it. Faizan has really blossomed in this championship. Again to the field up. Yeah, Faizan, he bowls, bats, he keeps stumps. What more can Central Punjab ask for? Still not yet off the mark. Sindh, well, he won't worry too much about it. He needs that one big over where he just starts feeling he's in. He doesn't require many balls for that. Yesterday also he started off pretty late to get off the mark. Sharjeel had a few leg buys going for him. But after that 107 not out knock, he really actually arrived in the national T20. A few changes are being brought in for the last ball of the over. And what are they trying to do? Is trying to figure out there's a deep mid-wicket being placed. Third man's coming in. And there is a deep backward square leg also in place. The two men outside the circle. That's for Sharjeel's pickup stroke. Yeah, slow one. End of the over. Maiden. So now they have to score in 19 overs. Not a mean feat to bowl a maiden to Sharjeel. His fans are definitely expecting some fireworks. So is this dugout. Mir Hamza not playing today. Anwar Ali. Two childhood friends in one frame, Sarfraz and Anwar. Captain has decided he's going to bowl to the two left-handers out there. In fact, a lot of left-handers. Two more to come after this. Saad and Saud Shakil. Faraz. Oh, he's missed that. It's gone right through for boundary. So Sindh is off the mark with a 4. Simon, we've seen so many times in this championship getting off the mark with a boundary. Some help there. Looks like Ali Asfan. Sloppy from the youngster, letting down his skipper. Really, the grunt from Qasim Akram showing his disgust. Change of personnel, same field. Shoaib Malik has gone into that backward point position now. And Ali Asfand
Swapping him at mid-off. Qasim Akram did it with the bat today. He's taking on the responsibility. Bowling inside the power play, never easy. Shot. You know what he's doing is he's making room and he's cutting that ball from in front of the stumps. Qasim Akram is trying not to give him room outside the off stump, but he's creating that gap and then placing it. Watch. Moving away, creating his own length and width. And that's right smack in the middle of the gap. It's a clever piece of batting. He's got to cover up for that maiden over. Now on the onside. There's at least two here. Yeah, good stop. Abdullah Shafiq there. For once, good effort in the field. But that swap of Ali Aswan and Shoaib Malik earlier in the over, it really typifies that how Shoaib Malik, who's an experienced campaigner, has been there for so long. As Ali Aswan has been swapped again, this time going to mid-wicket. Mid-on rather. It's just not good for the youngster. Tayyip Tahir has come on at long off. Oh, it was an inside edge there. Yeah, Tayyip Tahir is a better catcher of the ball, so they wanted long off, which is why Tayyip Tahir has gone there and the mid-on has been taken by Ali Aswan. So right now, Ali Aswan is being moved around a lot in the field. Single to end the over. It's 11 for no loss. Good to see crowd in. Ever since second game is being played under lights, we had good attendance here at the Multan Cricket Stadium. Crowd of all ages. Look at that. Look at that, Sikandar. Absolutely delighted. Don't drop the child. He's just... he's so excited. Amir Yamin continuing. Oh, this man is lovely to watch. I mean, he's just carved that. Played close to the body, opening the face, and just placement is immaculate. Delightful. Absolutely delightful. Look at that timing. And he holds the pose. Anybody? Take a picture. This boy is something special. Split the gap perfectly. I'm telling you, him and Shan Masood, they carry a geometry set with them in their minds. You cannot bisect the two fielders that way without any support. Slower one. Well read, well bowled. Well, if you ever thought T20 cricket was all about power, you need to see Saim Ayub bat, because that's not the case when he's in the middle. Good contest here. Amir Yamin is very experienced and wily campaigner. Having seen that brilliant piece of timing, he won't want to give him pace. Third man is up in the ring. Look at that square field on the offside. 4 fielders between short third and cover.
point and a backward point. Now they're all moving a little squarer. Nice regulation point and cover and extra cover. He's got that leading edge on that occasion. Again, that slower one. Just taking the pace off, and a very fuller delivery. Just trying to probably bowl a slow Yorker. Almost that. Amir Yamin has bowled 8 dot deliveries out of his 9. He's mixed it up very nicely. Central Punjab, remember, it's a do and die game for them. They have to win it to stay in the competition. Beautiful, beautiful. Identical to the first shot. Absolutely glorious. This time on the front foot, effortless ease. Save your legs. You don't bother running for those. Just a delight to watch this youngster. Too much room, Amir Yamin. I know he's upset, but he allowed him to free his arms. That's the extra man. That's for that. Maybe he's decided to bowl a touch fuller to Saim Ayub, so he wants to plug that mid-wicket area. He's sacrificed one from the offside. You've got a point, backward point, and then you've got that cover. So there's a gap in between. If he cuts it square, he can get the ball through. But provided what the plan is. At the moment, it seems like he's bowling fuller to Saim Ayub. Now, that's the problem. When you go to that length, you need a dive or two like that. Otherwise, it'll be a 4. Nevertheless, 2 boundaries, 19 for no loss. He faced that first over, and after that he's been on the non-strikers end for 2 overs. Sharjeel Khan yet to get off the mark. Would you believe that? Saim Ayub 19 of 12. Sharjeel haven't opened his account just yet. How many times have you seen somebody outscore Sharjeel? And he's also had most of the strike as well, young Saim Ayub. There we go. Off spinner against Sharjeel. Yeah, it is a bit strange. You don't see that every day. 7 deliveries faced and yet to get on the mark, Sharjeel. You usually do get off spinners for him. It's that ball that turns away from him. Just a slight turn, not too much. And he is going to play against the spin because he's going to go cow corner, mid-wicket. Off the mark now. Can they get 2? Easy 2. A couple to get off the mark for Sharjeel. Central Punjab have bowled better lengths at Sharjeel as well. Even Qasim Akram is guilty of bowling too short to Saim Ayub in the previous over. Not getting that desired timing. But sometimes I say he doesn't need timing. He's all brute force. He can hit the ball hard. You miss it also will clear the 30-yard circle. Can be 2 again.
can be 2 again. It's Saim Ayoub's danger end. They've thrown it to Sharjeel. That's well done, but still completed it. That's good calling, good running from Saim Ayoub. He pushed Sharjeel all the way. Once again, that length is good. Sharjeel struggling to the backhand. They will always throw at Sharjeel's end. Tayyib Tahir has got a bullet arm. What you don't need is Sharjeel coming out of his crease to attack the off spinner. That's trouble for him. Oh, he's getting close. The ball will skid on. It's new. It rushes onto you, doesn't it? 4 gone. It's 23 for no loss. मुल्तान खुश है और ऐसे में कासिम अकरम ने अपनी जगह पर गेंद थमा दी है अपने जो स्ट्राइक बॉलर हैं हुनैन शाह। दाएं हाथ से तेज बॉलिंग करते हैं, सबसे तेज बॉलिंग करते हैं सेंट्रल पंजाब की टीम में। हुनैन नए नए आए हैं और इन्होंने चंद दिनों में ही अपना लोहा मनवा लिया, लेकिन साइम अयूब से जो एक और नौजवान खिलाड़ी हैं फॉर्म में हैं, इनका बड़ा दिलचस्प ये मैचअप रहेगा। और इसे उड़ा के रख दिया सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। ये शानदार सनसनीखेज छक्का साइम अयूब का। या साइम अयूब बहुत शानदार फॉर्म में है और ये खराब आगाज है हुनैन की जानिब से। एक लेंथ डिलीवरी और इस लेंथ को हमने देखा है आज के दिन में, जिसने भी यहाँ बॉल किया उसको मारी पड़ी है और फ्रंट फुट पे बहुत ही शानदार शॉट, बैलेंस भी कमाल का रहा। यार अगर तेज बॉलर बॉलिंग कर रहा है और आप सामने छक्का लगाने में कामयाब होते हैं तो ये बैट्समैन की काबिलियत जाहिर करता है। इससे ये भी जाहिर होता है कितना अच्छा गेंद आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये रॉ में नहीं बह रहे कि एक छक्का लगा लिया है दोबारा स्ट्राइक करने के लिए जाएंगे, बिल्कुल गेंद को उसके मेरिट के मुताबिक ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे किया था ये शॉट। ये बहुत ही शानदार सीजन रहा है, आगाज रहा है नेशनल T20 का साइम अयूब के लिए। तेज रन्स करते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े हिटर हैं, टाइम करते हैं, क्लासिकल बैटर हैं जिसको तेज रन्स बनाना पसंद है। उठा खेला फील्डर, गेंद के साथ ही बाहर गए। तैयब ताहिर थे जो कि बहुत ही आला पाए के फील्डर हैं। इस बार गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि खुद पर काबू नहीं पा सके और आखिर में गिर भी गए, शायद चोट आई है। तो ये 2 छक्के लगा दिए यहाँ पर। फ्लिक ऑफ द रिस्ट जस्ट। हाँ जी, ये कमाल का शॉट था। लेंस डिलीवरी एक बार फिर थोड़ी लो डिलीवरी जरूर थी और अच्छी कोशिश, लेकिन उसी मोमेंटम में शायद पीछे चले गए। ऐसा ही जैसे आसिफ महमूद के साथ हुआ था पहली इनिंग में। डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे लेकिन अच्छी एफर्ट थी तैयब ताहिर की जानिब से। लेकिन शॉट की क्या बात है, बहुत ही कमाल का शॉट खेला है साइम अयूब ने। एक बार फिर दोबारा जरूर देखेंगे, इनफैक्ट बार बार देखेंगे ऐसा शॉट। तो यहाँ ये बिल्कुल फॉलो थ्रू ना होने के बराबर था, लेकिन शॉर्ट आर्म जैब ये कहलाता है। साइम अयूब ने इससे कमाल तरीके से एक्सिक्यूट किया। देखना है कि अब शॉर्ट गेंदों के बाद इनका अगला इनके पास हरबा क्या रह जाता है। हुनैन शाह के पास यहाँ ये गुड लेंथ, ये ज्यादा बेहतर गेंद है इस मरहले पर, क्योंकि ज्यादा मौके होते भी नहीं है फास्ट बॉलर के पास, खासतौर पर जब 2 ही फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद हों।
बेहतर नहीं होता अगर एक हाथ के साथ इस गेंद को पहले रोकने की कोशिश करते? बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा था बॉल, और शायद उनको अंदाजा भी नहीं था कि स्कर्टिंग कितनी दूर है। कोशिश जरूर की कि एंड पे बॉल को बाहर फेंक सके ग्राउंड के अंदर, लेकिन लेट हो गए तब तक। पिच बहुत शानदार है, ये तो कहना होगा। सफेंड किया साइम अयूब ने। रात के वक्त जो है गेंद स्किड होकर ज्यादा बेहतर तरीके से बल्ले पर आना शुरू हो जाती है। सिंध ने अपने जो आखिरी 2 मैचेस जीते वो बाद में बैटिंग करके ही जीते थे। अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। जब भी टॉस जीतते हैं साउथ शकील तो पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं, क्योंकि बहुत डिपेंड करते हैं अपनी बैटिंग लाइनअप पे। बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है साउथ शकील, साद खान, सरफराज अहमद, फराज अली, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स इस टीम में शामिल है और सक्सेसफुल भी रहे हैं चेस करने में। स्कोर कट करना चाहते थे लेकिन बाहर खाली गया और यहाँ ये गिर गए अपने फॉलो थ्रू में। चोट आई है, 2 छक्कों की भी चोट है, वो भी दर्द महसूस कर रहे होंगे। हुनैन शाह 5 के बाद 35 पर कोई नहीं। फेवरेट शॉट ऑफ स्पिनर को ये अक्सर रूम दे के खेलते हैं। आगे पिच हुआ बॉल, फेवरेट शॉट ऑफ स्पिनर को ये अक्सर रूम दे के खेलते हैं। आगे पिच हुआ बॉल, और जब फील्डर्स दायरे के अंदर होते हैं तो ये शॉट आसान हो जाती है। आपका दिल वैसे ही बड़ा हो जाता है कि अगर आप इनके ऊपर से खेलेंगे और रन हासिल कर लेंगे। इस बार शर्जील को बाहर निकलते देखा, अपनी रफ्तार और लेंथ को बदल कर रख दिया कासिम अकरम ने। शर्जील आमतौर पर बाहर निकलकर ये कम कामयाब होते हैं। ये फास्ट स्पिनर्स को ज्यादातर खड़े खड़े हिट लगाते हैं, आगे निकलते नहीं है। और इस बार कोई फील्डर अपनी जगह से नहीं हिल सका, और ऐसा अक्सर होता है जब शर्जील खान बैटिंग कर रहे हों। ये लाजवाब शॉट है, लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया, और खड़े खड़े जितनी जान इनके बाजुओं में है, देखिए बहुत ही जैब सा था एक, और जिस तरीके से बॉल तेज रफ्तारी से गया बाउंड्री लाइन की तरफ, ये शानदार शॉट है। ये इनकी कंफर्टेबल जोन है। जैसे आप कह रहे थे कदमों का इस्तेमाल जब करते हैं तो परेशानी होती है, इस जगह पे अगर बॉल करते रहेंगे तो ये कंफर्टेबल रहेंगे। और बड़ी तेजी के साथ रन भी हासिल किया, सरप्राइज किया उन्होंने ऑफ साइड के फील्डर को। सिंध की टीम सही वक्त पर ये जल हुई है, सही वक्त पर इसकी फॉर्म बहाल हुई है। पॉइंट्स टेबल पर उनका नंबर पहला है, सेंट्रल पंजाब का नंबर आखिरी है। अगर आज सेंट्रल पंजाब को शिकस्त हुई तो बाहर हो जाएंगे चैंपियनशिप से। इसलिए दबाव जो है सिंध से ज्यादा पंजाब पर है इस मैच में जीत का। कंफर्टेबल है, टॉप पे है, टीम बहुत अच्छी है, बहुत जेलिन होके खेली है, और किस्मतें बदली हैं जब से जो क्रिकेट है वो मुल्तान में आई है। हमने देखा सदर्न पंजाब बहुत शानदार खेल रही थी, बलूचिस्तान बहुत अच्छा खेल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा का एक सरप्राइज है, इस बारे में बात करेंगे। 6 ओवर्स के बाद 45 बगैर किसी नुकसान के सिंध।
जहां इस इनिंग्स का ये अब अगला जो मरहला है ये शुरू होगा इन 6 ओवर्स के बाद। पहला ओवर मेडन खेलने के बावजूद 45 रन बनाए सिंध ने पावर प्ले में। इससे पिछले इन्होंने 4 मैचेस में 50 से ज्यादा रन बनाए थे। तो ये बुनियाद जो है वो बहुत अच्छी उठाते रहे सिंध के ओपनर्स पावर प्ले में। शुएब मलिक, एक और ऑफ स्पिनर। कासिम अकरम को इतनी ज्यादा कामयाबी मिली नहीं। यहाँ तजुर्बे का फायदा उठाना चाहते हैं शुएब मलिक के। कासिम अकरम जो कि कप्तान है, 159 विकेट्स हासिल कर चुके हैं अपने करियर में। काफी लंबा और तवील करियर है इनका, बहुत ही शानदार करियर है शुएब मलिक का। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, फिटनेस की बात कर लें, ये सारे बॉक्सेस को टेक करते हैं शुएब मलिक शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में। लॉन्ग ऑफ को मलिक ने वाइड किया। डीप पॉइंट पर भी एक खिलाड़ी मौजूद हैं। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे। हम आगे बात कर रहे थे मुल्तान से। जब से मुल्तान में क्रिकेट आई है तो टीमों की किस्मतें बदली हैं। सर्दर्न पंजाब बहुत अच्छा खेल रही थी पिंडी लेग तक। केपी एक सरप्राइज पैकेज जो मुझे सबसे हैरानगी हुई कि केपी की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिप आया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी डिसअपॉइंटिंग नजर आई है। और आखिरी मैच में जब वो मैच हार रहे थे, जिस तरीके से प्लेयर्स हमें फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, शायद आदी नहीं है इस पोजीशन में कि आप, क्योंकि हमने देखा है केपी हमेशा मैचेस जीती ही है ये, तो काफी किस्मतें बदली हैं। सिंध ने शानदार किया, सेंट्रल मोमेंटम अच्छा पकड़ा है। ये 2-3 टीमों के लिए बहुत रास आई है क्रिकेट मुल्तान में। इस बार फ्लाइट में बीट कर लिया, यहां पर मौका हो सकता है और ये कैच ले लिया उसामा ने इत्मीनान के साथ। शुएब मलिक अपने तजुर्बे को बरूए कार लाए, उनने गेंद को पुश नहीं किया, हवा दी और शर्जील जो टाइम करना चाहते थे एक आसान सा कैच दे बैठे। यहाँ इसी तजर्बे की मैं बात कर रहा था कि शुएब मलिक ऑफ स्पिनर जेंटल, देखिए बहुत ही स्लो बॉल किया है, हवा में फोर्स किया कि शर्जील को आप जोर से मारिए। थोड़ा एक्स्ट्रा कवर की जाने मारते तो बेहतर रिजल्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ उसामा अमीर मौजूद थे और इख्तिताम किया शर्जील की इनिंग का। 13 रन बना सके, 46 पर 1 सिंध। काफी यकजा होकर खेल रही है सेंट्रल पंजाब और शर्जील खान, जिनको शुएब मलिक ने मजबूर किया बहुत दूर से शॉट खेलने पर। अब उनकी जगह ले रहे हैं कप्तान सऊद शकील। 583 रन इन्होंने बनाए हुए हैं, 70 इनका बेहतरीन स्कोर है, 2 मिस सेंचुरियां हैं क्रेडिट पर, इनमें से एक उन्होंने मुल्तान पहुंचकर ही बनाई। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं साउद शकील, टाइमर हैं, जोर से नहीं मारते हैं, टाइम करते हैं, अपना वक्त लेते हैं क्रीज पे, सेटल इन होते हैं और फिर रन्स की तरफ जाते हैं। लेकिन बहुत ही शानदार डिसीजन कासिम की जानिब से शुएब मलिक को लाने का। शुएब मलिक जो हैं वो मजबूर कर रहे हैं बैट्समैनों को कि वो बिल्कुल भी रफ्तार जो है वो दस्तयाब नहीं होगी उनकी जानिब से। ये देखिए उनने दावत दी कि आप जनरेट कीजिए, आप जोर लगाइए। और शर्जील जो है वो ज्यादा टाइमर हैं, हलाई की मदद से खेलना चाहते थे, शायद थोड़ा सा वाइड खेलने के लिए गए थे एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन गेंद उतनी ज्यादा टर्न हुई नहीं। देख सकते हैं कि जो शुएब मलिक बॉलिंग कर रहे हैं वो राइट तरीका है इस पिच पे, बहुत स्लो बॉल कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि आप जनरेट कीजिए पावर, मैं आपको इजी बॉल नहीं दूंगा। हाँ, बहुत ही उम्दा बॉलिंग, काबिल सताइश शुएब मलिक।
सिर्फ 2 रन दिए और कीमती विकेट भी शर्जील के लिए 47 पर 1। ये पावर प्ले में तो 1 मैन शो था और साइम अयूब ने अपने टैलेंट का एक बार फिर भरपूर मुजाहरा किया। स्क्वायर ऑफ द विकेट उनको रोकना मुश्किल हुआ और हुनैन आए तो सामने हिट लगा दिखाई और ये शॉर्ट आर्म जैब। उसके बाद शर्जील खान ने कासिम अकरम की अच्छी खासी पिटाई की। अभी भी क्योंकि 2 बाएं हाथ के बैट्समैन हैं इसलिए कासिम अकरम ऑफ स्पिन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसामा और जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं अली, उनको नहीं बुलाया गया। आज हम देखेंगे कि ऑफ स्पिनर्स काफी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे क्योंकि 5 लेफ्ट हैंडर बैटर हैं कराची की साइड में, सॉरी सिंध की साइड में। और ऐसा लगता है कि ये दोनों कासिम और शोएब मलिक इकट्ठे बॉलिंग करेंगे। शोएब मलिक से काफी कुछ सीखेंगे कासिम अकरम के ऐसी पिच पे कैसे बॉल करना है, थोड़ा स्लो बॉलिंग करनी है। तो लकी है कि 2 ऑफ स्पिनर हैं सेंट्रल की साइड में। यहाँ कासिम अकरम का आज बॉलिंग करने का अंदाज है और इनकी जो रफ्तार है वो शोएब मलिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो कद छोटा है और दूसरा ये तेज रफ्तार गेंद करना पसंद करते हैं। मोहम्मद हफीज की तर्ज के ये ऑफ स्पिनर हैं, विकेटों पर अटैक करते हैं ताकि बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका ना मिल सके। गेंद रुक कर आई। यहाँ मोहम्मद हफीज ऐसी बॉलिंग अगर ये करना शुरू कर दें, बैटिंग की पोटेंशियल भी है, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत खुशाइन बात है। अगर उन जैसे हाफ ऑफ ऑलराउंडर भी अगर हो जाएं, बन जाएं अगर ये हफीज जैसे, तो क्या ही बात है। एक बार फिर स्टंप्स में अटैक किया कासिम अकरम ने, लेकिन साइम अयूब ने आज बहुत अच्छा खेल दिखाया। ये जो 50 रन सिंध ने मुकम्मल किए हैं ये उन्हीं के मरहूने मिन्नत हैं, उनके जो 34 बने हैं। सईद अनवर की बैटिंग से मुतासिर होकर इन्होंने बैटिंग करना और ओपनर बनना पसंद किया था, उनसे इंस्पायर हुए थे। 8 ओवर्स मुकम्मल हुए, 51 पर 1। Just one success so far for Central Punjab. Shoaib Malik been really decent, getting rid of the big guy, Sharjeel. 51 after 8 overs. Sindh will take it. Got a lot of batting to follow. Time has been in sublime form. Timing the ball brilliantly. Last 2 overs have been very good. Been very, very good. You can get onto a Kingdom Valley official Facebook page and win prizes. You can be the next winner. And that's the important part with Shoaib Malik's over for 2. And then Qasim Akram bowling an over with 4. 2 overs with just 6 runs. Oh, he's missed it. Everyone's missed it. The Clark's missed it. Batsman's missed it. 2 runs awarded. Should be byes. Yeah, they are byes. It was there to be hit.
Clark, I don't know what he was doing. He wasn't expecting it. Got some decent pace. Shoaib Malik, he's a vital, very vital for Central Punjab if they want to defend this target. At the end of 8 overs, 59 was Central Punjab. There are a few behind, but then that's when Central Punjab accelerated. Shoaib is playing such an important role here, using all his experience against the left-handers. There's quite a few in the Sindh team. It's hard to come after this. With the pace with he's bowling with, not allowing anything to the batters. Have to craft it. Missed it, and that's runs, that's boundary. Shoaib doesn't like it. He is totally animated. He's bowling a tidy over. He wants the fielders to put in their effort. He's not happy. Pressure's released. Saim Ayub, he'll take it. He's been doing this all night long, creating his room, dominating the spinners. He maintained his weight on the back foot, made sure he could get decent amount of pace behind that shot. And fielders, yes, better effort was expected. Nice looking easy drive for a single. So this over is now just getting a few runs that Sindh requires. 7 of the first 4. He's going to test these two batters. Shoaib Malik, he's a very smart operator. Oh, that's a rare bad ball. That's a rare bad ball. He's absolutely angry with himself, Shoaib Malik. Another boundary. Saud Shakil on this occasion would be feeling very lucky. Very lucky he could found that freebie. All he needed to do was just find some wood on it. And that's exactly what he did. He was there to be hit. 2 boundaries now conceded in this over. Oh, another full toss, trying to toss it up. Okay, so here we are. This over gets them 12, 63 for 1. Daniel will now be given the ball. So that off-spin duo has now decided, let's put on some pace here. He's playing his first match here at Multan. It's a different surface altogether. He did dominate it and bowled really well on Pindi surfaces. But this one you have to be very careful where you're pitching the ball in terms of length. Daniel, his first appearance here in Multan leg. Still 104 required of 66. Should be a wide. Yeah, it is. Just marginal. Saud and Saim, they like with outside off stump. Very strong on back foot.
This angle might help them getting those runs. Ahmed Daniel should be targeting to stay within the stumps. They've got third man, deep cover fielder, deep square leg. He just gets away with that one. He's got a lot of shoulder power into his bowling. And he doesn't really believe in that run-up momentum to create pace. Wasim Akram in his last few days, or in the twilight of his career, he used to generate that pace. That's very short run-up. A lot of shoulder in that. That's why these days bowlers also work a lot on the upper body, the chest, the shoulders and arms, and the lower back. Yes, of course, you need that to bend it and then get the pace going. Look at that, he's just walking through. He's not started this run up yet. There he starts. It's just probably like those 16, 18 steps. Even that jump, it's not there. That can negate the pace he's been generating. They usually go on with a very short jump option just to keep going the momentum. Quick arms, the rotation. In the 10th over, Sindh 65. That's not a good ball. That's really not a good ball. He's allowed a lot of time. You'd appreciate Saim Ayub that he gets in good positions very quickly. He's trying to overcompensate those wide deliveries. It wasn't a bad deploy targeting the stumps. He really finished on the leg stump. Made it quite easy for Saim to play that shot. He's a very good cricketer, Saim Ayub. Loves to bat out there and quite evident in all this tournament. A slight fumble allows them the single. That's a good call from Saud Shakil. Qasim Akram is guiding that point area. Backward point. Throwing himself everywhere. He took brilliant catches the other day. They need a better effort all around the ground. A good cricketer, good package, three-dimensional cricketer. That's what you want in a shorter format. Leading the team as well. Good sharp rise. Hits the deck hard. And that length really doesn't allow you enough to cut the ball through. That's what Saud was trying to do. Yeah, that's a good delivery. Just took off. Was trying to play it in front of square. But that bounce, yeah. He was on his toes but never got the connection. It's good bowling according to the field. He's got protection on the offside. Should finish well. Just one more delivery to go. Yeah, very ambitious on that occasion. Very, very ambitious. Ten gone, it's 71 for 1. Comparison, Central Punjab, they were 73 for 4, Sindh 71 for 1. Well in control. Two set batters out in the middle. Got plenty of batting left in the dugout. Central Punjab need wickets. That's the only way they can win this game.
Last 2 overs have been good for Sindh. They've managed to extract boundaries there. 2 of Shoaib Malik's over, and then 1 from Ahmed Daniel. Just trying to keep up with that required run rate, 9.6. Current is 7, just above 7. They need a boundary every over just to stay in the game. Just backing the offside. They've pushed that deep cover way in front of square. Now 3 men patrolling that cut area for Saim. He's got him. Has he got him? He's going upstairs. Saim feels he's got his foot planted, the back foot. But quick glove work from Akhlaq there. Let's have a look. This lack of pace, that's what unsettling the batters. Even on this occasion. Checking the front foot, no ball, no problems there. He did lean into the shot. Seems very safe. Way behind Akhlaq. That's a lot of distance to cover on a spinner. Yep, he's not close to the stumps. He has to outstretch his arms to reach the bills. Not out is the call. It's a good setup though. He's packed his cut, he's tossing it up, inviting Saim to go into that offside. Got 2 fielders patrolling the boundary. Just a single there. He's bowling in those areas, Shoaib Malik. He knows he's got the square of the wicket protected in the deep. He just doesn't want to bowl a quicker one where he can cut that one through backward point. That's the vacant zone once he passes the 30-yard circle. That's one way to do it. Drag. Oh, what has he done? Oh my God, what was Hunain thinking and doing? That ball just developed a mind of its own. It's just turned away from him, didn't it? It's bound to spin away from you. That's very sluggish, very sluggish. Whenever there's a sweep shot, you know it's going to turn. It's going to go to the left of you. Just overran and very casual in that approach. That's a free boundary. Good shot inside out. He's played it wide of that fielder. My word. It almost went all the way. We'll surely go upstairs to have a second look. Extension of the arms, inside out. It's a classic left-hander shot against an off-spinner. Saud Shakil is too good. It's the regulation field that allowed him to exploit that open gap. Oh, it travelled all over the boundary. That's a 6. Effortless 6. Beautifully done by Saud. Just how the momentum shifts in this over. Another full toss, just tossing it up. That should be another couple at least. Oh, they've decided against it. Sometimes it gets tough to put the full tosses away. End of the over, 11 gone, 84 for 1. Shardil Khan, the big man, is gone on 13. But don't worry about it because Saim Ayub and Saud Shakil
been tremendous out there in the middle. 32-46. Saim and Saud just catching up. 21 of 15 deliveries. Well settled in. Got Saad, Faraz. So Faraz Ahmed to follow. First over went for 7. Pushing for two, can come back. Deciding against it is probably the right call. Slow one on this occasion to start with Ahmed Danial. He will mix it. Will put some pace. We'll look at that. This was a misfield. Hunain Shah. And over. There you go. The agony. This was a classic shot. Tells you how dominant he is. Stoppage, chance, this should be big. That came up sharply from Ahmed Danial. Got the wicket, got the breakthrough wanted, and the big one, Saim Ayub has to walk. This partnership was brewing for Sindh, and it was creating some trouble for Central Punjab, but Ahmed Danial with a brilliant delivery, serious pace, well-directed short ball. It hurried on to him. Couldn't really get into position to play that one. No problems. Abdullah on the receiving end. The partnership has been broken. It's a good breakthrough for Central Punjab at this moment. He was looking very dangerous. Just 4 shy of his another 50. Goes on 46. Sindh 85 for 2. Saad is the new batter in. Another left-hander. Eighth game for him. It's a crucial moment and the juncture in the game where another wicket can just turn the tables on Sindh. 4 more to go. They need to carry on with that momentum that's been created by Saim Ayub and his partner Saud Shakil. You got Sarfaraz to come after this, and then they can hope if they can get a good platform ready. Faraz Ali will come, in fact, as another left-hander. Then they can get Sohail Khan and Asif Mahmood who can hit the ball. It's asking for 2, you can hear it, but they have decided against that. Ahmed Danial, that was a brilliant piece of delivery. Good pace, right on the face. There's nothing much you can do as a batter. And he wasn't in control of the shot at all. Undone by a brilliant delivery by Ahmed Danial. Good over. There's 2 runs and a wicket in the 3 balls. Another short one. When pulled with the control. In the Pindi leg, Saud was finding it tough to get that timing and that form. But here he's got fluency. The ICC Deaf International Cricket Champions Trophy this year, 2022, from the 1st to the 9th of October in the UAE.
great platform. See South Africa, Pakistan, India, Bangladesh, Australia. Whoa. They can come back. Where's the keeper? He's there now. It's all happening. It was a good occasion or opportunity rather for Ahmed Daniel. Seemed like he was running short. He just overthrow allowed another single. He's saying throw it quickly. They are all afraid they might run for third one. Again, the sharp rise. He's quick. You can actually get deceived because arm action is so quick. 12 gone. It's 90 for 2. मुकाबला बिल्कुल बराबर का है अगर रनों के एतबार से देखा जाए 12 ओवर्स के बाद। कुछ सिंध के इख्तियार में उनके दो ऐसे बैट्समैन हैं जिनसे तवक्को की जाती है कि वो अपनी टीम को इस स्कोर के पास ले जाएंगे। खुद को शॉक करा लिया, ज्यादा आगे निकल गए थे। शोएब मलिक ने अपनी रफ्तार तब्दील की, हालांकि आज खासी आहिस्ता बॉलिंग की है शोएब मलिक ने। तेज बॉल कर दिया, 7 यॉक हो गए। क्लासिकल पीस ऑफ बॉलिंग थी जब उन्होंने शर्जील को आउट किया। शोएब मलिक ने काफी आहिस्ता बॉल की थी। जहां अपनी फील्ड के बिल्कुल मुताबिक गेंद करते हुए नजर आए हैं शोएब मलिक। और यहां सेंट्रल पंजाब के पास एक ही चारा है इस मैच में रहने के लिए, क्योंकि विकेट बैटिंग करने के लिए बड़ी मौजू है, तो विकेटें लेते जाएं। सिंध की बैटिंग में आज शायद उतनी डेप्थ नहीं है, क्योंकि अनवर अली भी नहीं है, इसके अलावा मीर हमजा नहीं खेल रहे। और इसे चिप कर दिया बॉलर के सर के ऊपर से। अच्छी फील्डिंग। और क्या ये पहुंच पाए हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं शोएब मलिक एहसन रजा से। खासे खुश हैं सेंट्रल पंजाब के खिलाड़ी। शोएब मलिक फील्ड में अपने पूरे जोबन पर नजर आए हैं आज। बैटिंग में तो ज्यादातर कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अच्छा बॉल को रिसीव किया, काफी आगे चले गए थे, वहां से बैक फ्लिक किया। बहुत ही नजदीकी मामला है। जहां यहाँ हम देख सकते हैं जो बेल है वो ग्रूव से निकल रही है, और अभी तक इनका बल्ला जो है वो क्रीज के पीछे है। शोजेब रजा इस वक्त मौजूद हैं और उनको इस बात का फैसला करना है कि क्या अपनी क्रीज में साद खान पहुंच पाए थे या नहीं। लेकिन ये तो बहुत ही करीब से करीब तर है, और हो सकता है कि शक का फायदा यहाँ पर साद को मिल जाए, क्योंकि जो बेल है उसका ग्रूव से निकलना जरूरी है, इसलिए नॉट आउट करार दिया गया। शक का फायदा दिया शोजेब ने यहाँ पर साद खान को।
इससे ज्यादा करीबी मामला हो नहीं सकता। एक फ्रेम में जब वो बाहर हैं तो बेल्स ग्रुप में है, और दूसरे फ्रेम में जब बेल्स ग्रुप से निकली लगा कि बैट उनका स्लाइड हुआ। अच्छा फैसला शोजब का। अच्छी स्मार्ट क्रिकेट थी शोएब मलिक की जानिब से। यहाँ इरफान न्याजी की जानिब से भी जो 12वें खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़ी तेजी के साथ गेंद पर अटैक किया और थ्रो किया। मलिक ने इसे फ्लिक कर दिया आगे जाकर। लेकिन जितने भी बाउंड्री राइडर हैं उनको खबरदार रहना होगा, क्योंकि जो सऊद और साद हैं ये ज्यादातर रन दौड़ कर बनाते हैं, जानते हैं कि बाउंड्री का फासला ज्यादा है और इसलिए ये फील्डर्स को मसरूफ रखेंगे दोनों जानिब। ये रनिंग देखिए, दोनों बहुत ही तेज रफ्तार खिलाड़ी हैं, ज्यादा जोर लगाना पड़ा साद को। देखिए शोएब मलिक ने किस तरह सूरत हाल की नजाकत को भांपा और क्रिएट की एक अपॉर्चुनिटी। स्मैश करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह बल्ले पर नहीं आई। जी हाँ, ये स्मार्ट क्रिकेट है, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि बॉलर को विकेटों के पीछे रहना चाहिए, लेकिन आपको लकीर का फकीर होना नहीं चाहिए हर बार। और शोएब मलिक बड़ी चालाकी के साथ आगे चले गए थे। दाद देनी होगी शोएब मलिक को, जिस तरह उन्होंने जी जान से आज फील्ड में एफर्ट की है। तो बिल्कुल फाइटर की तरह वो एक एक रन के लिए लड़े अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छा लगा ये देखकर। गैप में खेला, एक ही रन इस बार बन पाया। सऊद शकील स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे। 13 ओवर के बाद 96 पर 2 सिंध। आमिर यामीन के 2 ओवर बाकी हैं। नैन शाह ने सिर्फ एक ही ओवर किया है। अहमद दानियाल के भी 2 ओवर बाकी हैं। देखना होगा अपने ऑप्शंस को किस तरह यूज करते हैं कासिम अकरम, क्योंकि 7 ओवर का खेल बचा है। आमिर यामीन को भी देखा गया कि डेथ में वो स्ट्रगल करते हैं। क्या हुनैन को लेकर आएंगे? उसामा मीर ने अभी तक बॉल नहीं किए। जहां और शायद अब शोएब मलिक के एंड से उसामा मीर को लाया जाएगा। ये नीली चांदनी का नजारा है यहाँ मुल्तान शहर में। यहाँ पर जोश जज्बे की कभी भी कमी नहीं रही। अहमद दानियाल जिन्होंने बड़ा तेज स्पेल किया, साइम अयूब को उन्होंने बाउंसर पर आउट किया। बड़ी हैरानी हुई थी जब रावलपिंडी से मुल्तान पहुंचकर इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। ये टॉप विकेट टेकर थे पिंडी के राउंड में सेंट्रल पंजाब के लिए। अच्छा क्विक काम एक्शन है और अक्सर देखा गया है कि अपनी रफ्तार से ये परेशान करते हैं बैटिंग टीम को। इस बार स्लोअर वन का इंतखाब किया, इनटू द पिच किया था और सऊद शकील सही तरह रीड नहीं कर सके। बिल्कुल हैरानी की बात थी जब इन्हें ड्रॉप किया गया, लेकिन साइम अयूब ने जिस तरह का ये टूर्नामेंट खेला है, बड़ी बड़ी सुर्खियों में उन्होंने जगह बनाई। एक एरिया ऐसा था जो भी अनट्राइड है उनके खेल में, जिसको आज किसी हद तक एक्सप्लॉइट किया अहमद दानियाल ने। ज़्यादा शॉर्ट पिच बॉलिंग देखने में नहीं मिली उनके खिलाफ। इस मरतबा तो स्लोअर कटर था, शॉर्ट पिच बाउंसर था, गेंद बिल्कुल भी सऊद तक नहीं पहुंचा। 2 साल पहले कराची में PSL खेले थे लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन उस वक्त इनके पास ज़्यादा हरबे नहीं थे। ये इनटू द पिच ये कटर नहीं किया करते थे, ज़्यादा तेज बॉलिंग करते थे। छोटा रनअप है, फॉलो किया और रन आउट होने का भी खतरा था। डायरेक्ट थ्रो काम तमाम कर देती। अली असफन थे फील्डर, उनने अच्छी कोशिश की लेकिन निशाना खता गया। अच्छी रफ्तार से बॉल कर रहे हैं अहमद दानियाल। ये ग्लव्स पे लगा है
साद खान के और आउट हो जाते अगर यहां डायरेक्ट हिट लगती। ये रन्स जो हैं ये फील्डर्स के हाथ से छीनते रहेंगे ये दोनों खिलाड़ी, जिस तरह पहले बात हो रही थी, क्योंकि ये स्ट्राइक से हटना पसंद करते हैं और दौड़कर इनको रन बनाना इस फॉर्मेट में भी मतलूब रहता है। तो इसलिए जो दायरे के फील्डर हैं वो आ सकते हैं 2-2 4-4 कदम आगे भी। अभी भी ये दायरे के बाहर से स्टार्ट ले रहे हैं अली असफन स्क्वायर लेग पर। देखिए ये रन रुक सकता था अगर ये दायरे के बाहर से नहीं आते अली। बिल्कुल यहाँ पे चांस ले सकते हैं। ज्यादातर ये इन फील्डर जो दायरे के फील्डर हैं ये उनकी अपनी कॉल होती है, वो कहां से शुरू करते हैं जहां वो एक रन रोक सकें। यहाँ अगर एक रन भी रुक गया, स्ट्राइक रोटेशन रुक गई, तो प्रेशर बढ़ेगा इन दोनों बैटर्स पर। ये अच्छा यॉर्कर था। और ये T20 एक ऐसा खेल है जिसमें कई बार फील्डर को अपनी कप्तानी खुद करना पड़ती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये आप पे ही मुनसर होता है। अभी भी ये खिलाड़ी जो है दायरे के बाहर से ही स्टार्ट ले रहे हैं, तो इसका दूसरा मतलब ये लिया जा सकता है कि एक रन ये देने पर आमादा है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस बार, साथ से दूर इस गेंद को किया। इससे पिछली गेंद बड़ा अच्छा यॉर्कर था। लेंथ को अच्छा मिक्स कर रहे हैं, शॉर्ट पिच बॉल का भी इस्तेमाल किया, वेरिएशन इन पेस, और इस मर्तबा वाइड यॉर्कर के लिए गए। बैट्समैन को बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अगली बॉल क्या होगी। कोई प्लान वो बैट्समैन को बनाने नहीं दे रहे अपने खिलाफ। बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी भी करते हैं। टेप बॉल क्रिकेट इन्होंने बहुत खेली है लाहौर में, ये टेप बॉल क्रिकेट की प्रोडक्ट हैं अहमद। इसलिए रन अप छोटा है और थोड़े रन अप से ही ये बड़ा काम कर देते हैं। और ऐसे जो बॉलर हैं इन दिनों ये कप्तान पसंद करते हैं। ऐसे बॉलर्स का टीम में होना उनके लिए अच्छा शगुन होता है, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लेते ओवर खत्म करने में। एक बार फिर अच्छी रफ्तार के साथ गेंद की, लेट हो गए साद खान इस पर। फॉलो थ्रू में गिर पड़े दानियाल। साथ ने भी ज्यादा जोर से स्ट्राइक करने की कोशिश की और इतना वक्त देते नहीं है अहमद दानियाल। अच्छी पेस है इनकी, शोल्डर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आप देखें कि आखिरी डिलीवरी स्ट्राइड में से ही अपना मोमेंटम गैदर करते हैं। रनअप ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा तेज भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सही जी जान लगाते हैं डिलीवरी स्ट्राइड, और उनकी रिलीज है शोल्डर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इस सीजन में पाकिस्तान के जो पेस के वसाइल हैं उनमें इजाफा हो रहा है। और देखिए मैदान पर ये मशवरे बढ़ते जा रहे हैं कासिम अकरम के लिए। आमिर यामीन भी आए थे जो इस मैदान के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि मुल्तान के खिलाड़ी हैं। सदर्न पंजाब सेंट्रल पंजाब आए। शुएब मलिक के बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत मदद की है इस टूर्नामेंट में सर बसर कासिम अकरम की, जो कि नौवारिद हैं कप्तानी के मामले में। लगा ऐसा है कि कासिम अकरम ने ग्रो किया है इस टूर्नामेंट में। शुरू में तो वो बिल्कुल ही है इस बड़े टास्क के लिए अहल नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि बहुत जूनियर हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनकी टीम में। अब आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ उन्होंने अपनी कोई भी फॉर्म हासिल की, बल्कि एक फील्ड में उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक एतमाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यकीनन शुएब मलिक का इसमें बहुत बड़ा किरदार होगा। और दूसरी जानिब जो सिंध के लिए रन रेट है ये अब 10 से सर उठाने लगी है, 10.86, और अगर ये 11-12 की तरफ निकल जाती है, जहां पर आगे चलकर आपको इस कदर मुश्किल हो जाएगी, एक ओवर में 2-2 बाउंड्रीज की जरूरत हो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा विकेट हाथ में होने के बावजूद। अभी ये नहीं भूलना चाहिए उसामा के ओवर्स बाकी हैं। स्लो बॉल बाउंसर, 1 रन का इजाफा। सेंट्रल पंजाब की टीम को ये दुखता नहीं है, 1 रन 1 गेंद पर 14 ओवर्स के बाद 101 पर 2।
सुपर रन औसत 11 की हो गई है। अब यहां से सिंध की कोशिश होगी कि यहां ओवर में एक बाउंड्री जरूर आए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे फिर पीछे रह जाएंगे इस इक्वेशन में। सऊद शकील उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है, 23 गेंदों में 30 रन अब तक बनाए हैं। कप्तान ने उनका स्ट्राइक रेट 130 का है और 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब 7 जो हैं वो हाथ पांव मार रहे हैं। अभी तक 9 गेंद खेलने के बाद वो एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। हुनैन शाह वापस आ गया, पहला ओवर उनका महंगा रहा था। ये एक अहम लम्हा है गेम में। हुनैन शाह ने सिर्फ 1 ओवर किया है। बॉलिंग ऑप्शंस तो कासिम अकरम के पास बहुत हैं, लेकिन अली असफंद और उसामा मीर से बहुत कम बॉलिंग करवाई है। और निहायत जोरदार शॉट और गेंद गई आसमान से बातें करती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। और जहां ये सिंध की टीम को जरूरत थी वापस मोमेंटम पाने के लिए, और सऊद ने पहले ही ओवर में बड़ा दिल दिखाया। इस तरह के शॉट्स के लिए जाने नहीं जाते, बहुत ही कन्वेंशनल और क्लासिकल प्लेयर हैं। इस मर्तबा लाइन और लेंथ को जल्दी पिक किया और बहुत ही जोरदार छक्का लगाया। भरपूर टाइमिंग, ज्यादा तवील कामत के नहीं है सऊद शकील, इस बॉल ने बहुत लंबा फासला तय किया। काफी बड़ी बाउंड्री है स्क्वायर की, छक्के की जरूरत थी उन्हें। अच्छा कवर ड्राइव, एक ही रन बन सका। आज ऐसा लगता है कि जो सिंध के बैट्समैन हैं, ये क्योंकि नौजवान है, हुनैन शाह इतना ज़्यादा तजुर्बा है नहीं, ये इनकी हिट लिस्ट पर है और इसीलिए सभी खिलाड़ियों ने कोशिश की है कि इनके खिलाफ ऑल आउट जाना है, इन पर अटैक करना है। बिल्कुल, और मैचअप्स का दौर है। बात कर रहे थे अली असफंद और उसामा की, तमाम ही बाएं हाथ से खेलने वाले खिलाड़ी आए हैं। इसी वजह से कप्तान कासिम अकरम ने उन बॉलर्स का इंतखाब नहीं किया अभी तक। स्क्वायर लेग को अब पीछे धकेल दिया गया। फाइन लेग पर अहमद दानियाल को आगे लाया गया दायरे के अंदर। ऑफसाइड में पूरी तरह गैप ढूंढ नहीं सके, अच्छी फील्डिंग की अली असफंद ने। ये अच्छा ओवर है, 8 रन आ चुके हैं पहले 3 गेंदों पर। क्या आप उसामा से बॉलिंग कराते? इसके बावजूद के 2 बाएं हाथ के प्लेयर्स हैं, लेकिन उसामा ने अच्छी बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में, चांस लिया जा सकता था उन पर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विकेट टेकर हैं, गुगली अच्छी करते हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन को वो टॉप स्पिनर से परेशान कर सकते थे। ज्यादा अच्छा कंट्रोल है और इन दिनों ज्यादा रन्स भी नहीं दे रहे। उम्दा बैटिंग कर रहे हैं सऊद, उन्होंने अब तक सूरत हाल को बेकाबू नहीं होने दिया। तो कोशिश कर रहे हैं कि साद खान पर दबाव को कम से कम किया जाए, लेकिन अब शायद वो वक्त आ गया जहां पर दोनों एंड से यहाँ तेज बैटिंग करने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर यहाँ एक भी ओवर ये 19-20 हो गया तो फिर ये जो आने वाले खिलाड़ी हैं इनके लिए मुश्किल हो जाएगी क्रीज पर पहुंचते ही बड़े शॉट्स खेलना। किनारा और गेंद गई विकेट कीपर के महफूज हाथों में और चार्ज किया, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी साद को, इसलिए उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर वार करने की कोशिश की और गेंद बाउंस हुई। और क्योंकि बैट्समैन का अंदाज देखकर लेंथ को तब्दील कर लिया था हुनैन शाह ने। अच्छी बॉलिंग, लेकिन साद बिल्कुल भी आउट ऑफ रिदम नजर आया आज अपनी इनिंग्स में। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन आज शुरू से ही बिल्कुल रिदम नहीं पा सके और अपनी विकेट का नुकसान कर बैठे। 11 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाए। सिंध की टीम 110 पर थी।
आइटम ओवर है सभी ऑफ स्टंप भी अंदर कर देना प्लीज ऑफ स्टंप पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक किया हुनैन शाह ने। सरफराज अहमद है नए आने वाले खिलाड़ी। 41 रन की इनको ज़रूरत है सिर्फ अपने 4000 रन मुकम्मल करने के लिए। अपना 250वां मैच खेल रहे हैं। अच्छा स्ट्राइक रेट है, मिडिल ओवर्स में खेलते हैं। देखना ये क्या इनके सामने ये उसामा से बॉलिंग अब कराएंगे। अच्छी फॉर्म में रहे हैं सरफराज अहमद इस टूर्नामेंट में। अच्छा फाइट बैक किया हुनैन शाह, जिनकी पहली गेंद पर इस ओवर में छक्का लगा था, दबाव में थे और यहाँ बैट्समैन को देखा को चार्ज करने के लिए आगे आए, वहीं अपनी लेंथ को तब्दील किया, गेंद दूर लेकर गए लेफ्ट हैंडर से। 111 पे 3। राइट आर्म बॉलिंग ओवर क्योंकि अनवर अली नहीं है और उम्मीद यही है कि आसिफ महमूद को इसके बाद खेलने के लिए भेजा जाएगा। सैयद फराज अली एक और स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। आसिफ महमूद पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग में भी खुद को विनर साबित किया था। तो अभी तक दोनों एंड पर फास्ट बॉलर से दिल भरा नहीं है कप्तान का। और आज सोच यही रही सेंट्रल पंजाब की कि शुरू में जब गेंद नहीं थी उस वक्त उन्होंने पेस ऑफर नहीं की सिंध को दायरे के ओवर्स में, और यूं ही फील्ड की पाबंदियां नरम हुई उसके बाद फास्ट बॉलर जो है उनको बॉलिंग दी गई। लेकिन इंटरेस्टिंग ऑप्शन ले रहे हैं कप्तान कासिम अकरम। अहमद दानियाल का ये आखिरी ओवर है, इसके बाद 2 ओवर हुनैन शाह के बचे हैं और आमिर यामीन के 2 ओवर्स हैं। देखते हैं वो अपने इन बॉलर्स को किस तरह यूज करते हैं। अगर सिंध की टीम इन ऑप्शंस को देख रही है, यकीनन वो आमिर यामीन को टारगेट कर सकते हैं। डेथ में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ इसलिए ये बेहतर होता कि सरफराज अभी आए थे, ये उसामा से बॉलिंग करा सकते थे, लेकिन अब खेल कहीं और निकल गया है और अब मुश्किल हो जाएगा कासिम अकरम के लिए स्पिनर का इस्तेमाल करना आखिरी 4 ओवर्स में। और ये अच्छी गेंद नहीं थी और ना ही अच्छा नतीजा बॉलर के लिए। सऊद शकील ने इसे हुक कर दिया और ये इनायत थी बॉलर की सिंध के कप्तान पे। थोड़ा सा मूव करके विकेटों के आगे आ गए थे सऊद, लेकिन लाइन खराब थी। सऊद ने अच्छा बैलेंस बरकरार रखा और इनको बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। सऊद का ये नया रंग ढंग है आज। ये इस फर्क का एहसास होगा अहमद दानियाल को। उनने साइम अयूब को जरूर शॉर्ट पिच गेंद पर आउट किया था, लेकिन सऊद एक मंझे हुए फर्स्ट क्लास बैट्समैन है और वो इस तरह के कई इम्तहानात से गुजर चुके हैं, इसलिए आप शॉर्ट गेंद कर नहीं सकते। और लगता है कि गेंद जो है उसकी हालत बिगड़ गई है इस जारहाना शॉट के बाद। इस टूर्नामेंट में ये कुकाबुरा की जो खेप इस्तेमाल की जा रही है इस सीजन में, अब तक हमने ज्यादा गेंदों की जो शेप है वो बिगड़ते हुए देखी नहीं है। बिल्कुल 20 ओवर्स के मैच में हम ही देखा जाता है, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि कभी कभी कोई ऐसी खेप आ जाती है जो वो बॉल जल्दी अपनी शेप खो देते हैं और बॉलर्स उससे खुश नहीं होते। और आहिस्ता गेंद थी और एक आसान सा कैच गया अली असफंद के पास। इस बार स्लो बॉल बाउंसर और अब सेंड ऑफ दे रहे हैं सऊद को। अहमद दानियाल ये ज्यादा जज्बाती हो गए थे क्योंकि मुकाबला चल रहा था उनका सऊद के साथ।
ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ इस मर्तबा। स्लोअर डिलीवरी से धोखा दे दिया उन्होंने सऊद शकील को, और इसके बाद जरूर उन्हें ये एहसास दिलाया कि ये मुकाबला मैं जीत चुका हूं। मैच अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छी बॉलिंग अहमद दानियाल की, बहुत ही बरवक्त कामयाबी दिलाई उन्होंने सेंट्रल पंजाब को। शानदार इनिंग्स खेलने के बाद वापस हुए सऊद शकील, 44 रन बनाए 118 पर 4। आसिफ महमूद को ये बैटिंग में प्रमोशन मिल गई है। पिछली इनिंग्स जिसमें इन्होंने मैच जितवाया था, उसके बाद 28 ये बेहतरीन स्कोर नॉट आउट इन्होंने किया 2 दिन पहले यहीं पर। वही इनकी इकलौती इनिंग्स भी है आज तक की T20 में। ये फास्ट बॉलर को सामने अच्छी हिट लगाते हैं, बी के एरिया में ऑन द ऑफ भी शॉट खेल सकते हैं। दरअसल आसिफ महमूद जो हैं ये पहले बैट्समैन थे, ये बाद में बॉलर बने। इब्तिदा में इनको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता था, लेकिन यहाँ सिंध का ज्यादा इन्हिसार इनकी बॉलिंग पर रहा है। पिछले मैच में इनिंग्स थी, वो पहली इनिंग्स थी इस लेवल पर उनकी। बरमला अपने टैलेंट का उन्होंने इजहार किया, और अब सिंध दोबारा उसी पोजीशन में। 50 रन की जरूरत है 27 गेंदों पर। यार अब जो ऑफ साइड में दायरे के फील्डर हैं वो पेशकदमी कर रहे हैं, वो आसानी के साथ रन नहीं देना चाहते। ओह शानदार बाउंसर अहमद दानियाल, उनने दिल जीत लिए हैं सेंट्रल पंजाब के जितने भी मद्दाह हैं अपने इस उम्दा स्पेल के जरिए। देखिए स्लो बॉल बाउंसर अपने शॉट को तकरीबन चेक किया, सीधा हाथों में खेल बैठे। पूरा शॉट खेल जाते तो शायद क्लियर कर देते अली असफन को, लेकिन डिसीव हो गए स्लो डिलीवरी से। लेकिन ये अच्छा प्लॉय है अहमद दानियाल, बहुत जान लगाकर उन्होंने बॉलिंग की है, और उनकी शॉर्ट पिच बॉलिंग बहुत ही शानदार रही है। पिछला बाउंसर भी बिल्कुल टारगेट पर था। ओह ये तेज गेंद थी, सीधी लगी है हेलमेट पर जाकर। लेट हो गए, पुल करने के लिए गए आसिफ, और इनकी खैरियत दरियाफ्त की जाएगी। एक और बड़ी तेज गेंद थी और ऑफ द विकेट और तेज निकली और फॉलो करते चले गए बॉलर बैट्समैन को। जो एंगल बन रहा था वो बिल्कुल बैटर्स को फॉलो करता जा रहा था, और बिल्कुल पीक के ऊपर जाकर लगी जहां पे बैज होता है। थोड़ा सा एहतियात करनी होगी आसिफ को। जैसा मैंने कहा, यहाँ पे सेंट्रल पंजाब के कप्तान ने जो ऑप्शंस इस्तेमाल किए हैं उसमें सिंध के पास मौका है कि वो कम बैक कर सकें। अहमद दानियाल की एक गेंद गुजार लें। तो फिजियो जो हैं वो शायद जल्दी इनसे पूछकर चले गए कि आप किस शहर में हैं। बॉक्सिंग के मैचों में जो काउंटडाउन होता है, यहाँ पर वो काउंटडाउन तो नहीं होता, लेकिन जरूर वो चेक करते हैं कि आपको अपनी गिनती याद है कि नहीं है, और ये मरहला जल्दी तय पा गया। इसको लेग अंपायर अरसलान रजा वो भी मुतमईन हो गए सूरत हाल से, वो वापस चले गए अपनी पोजीशन पर। लेकिन अहमद दानियाल का इस स्पेल ने ये मैच में सेंट्रल पंजाब को वापस लेकर आए, जो निकलता जा रहा था उनके हाथ से। उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की हैं, और खासतौर पर सऊद शकील की जो विकेट थी वो बहुत कलीदी थी। जिस तरह वो सेट होकर खेल रहे थे, मैच को एकतरफा कर सकते थे। क्रीज में पीछे तो धकेल चुके हैं आसिफ को। देखते हैं 1-2 ट्रिक करेंगे, आगे से बॉल करेंगे या फिर शॉर्ट पिच बॉल करेंगे।
लॉन्ग लेग है, डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है और लॉन्ग ऑन भी. स्लो बॉल बाउंसर किया, अपना पहला रन बनाया आसिफ ने एतमाद के साथ इस गेंद पर. कामयाब ओवर अहमद दानियाल का, उनको शाबाश मिलेगी. 119 पर 4. Right arm over. Sindh grappling right now in comparison. Central were on 133, 6 down. They are 119, 4 down. Got their work cut out. Faraz and Asif. Central has done really well. You have to give credit to Qasim. He's been depending on his fast bowlers and they have responded well. Arslan Shah. Fast bowler still operating. This is a slight concern, Ali. When is he going to introduce the spinners? I doubt in this game because the fast bowlers are doing such a great job. You would want Arslan Shah from this end to keep the pressure on that Ahmed Danial has put. Oh, he goes back. He hasn't found the connection and neither the distance. Shoaib Malik was waiting. And he's the one man Asif Sindh needs out there in the middle. Yeah, absolutely the hero from the last game. He's got a good technique while hitting the ball. He clears his leg and he's a very strong boy. But on the other hand, if you look at Arslan Shah, a very young fast bowler, rookie fast bowler, he's had an off day today. 23 runs in 2 overs. Qasim Akram would be hoping that he finishes off well. He's trying to guide it to third man for a single. It's really well bowled. Mixing things up, Arslan Shah. And that's clever change of pace. Well done, well disguised. That is good cricket by young Arslan Shah. He's been very impressive throughout the tournament. His third game though, he's taken 2 wickets each in the both games that he has played. Good prospect. He means business, I tell you, Sarfaraz Ahmed. He wants to win it for Sindh. 47 of 22. It's doable. Very much. Again, he's beaten it with the lack of pace. That's very smart bowling. Oh, that's good bowling. Again, slower one. Sarfaraz was ready on his back foot. Was expecting a shorter one maybe. But that is good change of pace. That is clever cricket. That is the support that Qasim Akram was hoping that he can get from this end, because Ahmed Danial has bowled beautifully. Qasim Akram having a word with Hanan after every delivery. It's been working. 2 dots. Again. He's asking the right questions. Trapping Sarfaraz. If Central goes on to win this game, it would be this over. Arslan Shah's over, just given away 1. Sarfaraz Ahmed, we all know that he's a very experienced campaigner. Job well done by Qasim Akram also. Played a very good inning. With the bat, bowled well, used his bowlers very nicely. Very clever captaincy. Because he knew that this is the game. If you lose this one, you're out of the tournament. Run rate just crawling up past 14. This time pace offered. Only be a single. Pressure is on Asif now. Just 2 coming so far of this over and 1 delivery to go.
Yeah, you're putting too much pressure on the youngster Asim Mahmood. He's done it before once. Can he repeat that performance that he did against KP? That's what Sindh would be hoping, that he delivers again. Looks a very strong lad, very committed cricketer. Yeah, he has that hitting ability, but you have to be careful against Hunain Shah. He's got some serious pace and it's not easy to just club him anywhere in the ground. Would love to get that length, probably try to bowl leg side. Oh, that's brilliantly bowled. Another single. Exceptional over under pressure by Hunain, just giving 3 away. 17 done, Sindh 122 for 4. We've witnessed some great action, exhilarating cricket so far in this tournament, and they are enjoying it under lights. You can see the delight on their faces. And they are seeing themselves on the screen. They've come in good numbers. Families, kids, everyone has come and enjoyed the game of cricket. And they've been thoroughly entertained by some quality cricket. Since the time we have come to Multan, we've seen some close games. Especially that game, that Sindh KP game. That was an excellent game which Mir Hamza and Asim Mahmood won it for them. And now we see a change in bowling for Central. But is this the game that is going down till the last ball? 15, the required run rate. And Sindh is just hanging around 7.18. It's going to be an important over. Amir Yamin, he needs to bring his A game. Need to bowl in pairs. Asif, he's ready and loading. He's trying hard. It's a good ball to start with. That is excellent bowling. He's bowling those Yorkers, not giving him enough room, not enough width to move his arms. I think that is a very, very good bowling by Amir Yamin. I think it has been set up by Ahmed Danial, followed by Hunain, and now Amir Yamin going with the same plan, having long on and long off back. That is the right way to go. The Pacers have done a tremendous job for Central Punjab. 11 balls since last boundary. Can they get one here? Oh, right in the block hole. They're pushing hard for the second one. Will come back. Slight fumble made it easier. Fielding. You've got to be right there. You've got to bring your A game. Got to be in the game, because this is a crucial game. Remember, Central has to win this to stay in the tournament. And if you keep on making such mistakes, you are giving an easy path to the opponents. Niazi in the field in place of Tayyib Tahir. Still pushing for second one. And they are coming. There's a run out chance. Oh, the vivid throw. A better throw was required. He ran the distance all right, picked it up right, but the throw was vivid. Better throw would have made difference. And it was Asim Mahmood's end. Now we see, guess what, a youngster being replaced by Shoaib Malik. How cool is that? How fit is this man? Marvelous, excellent to see. So far, no boundary whatsoever, even in this over. Safraz back on strike. Again, into the pitch, just be a single. That's brilliant bowling. I mean, the execution has been spot on from Central Punjab Pacers. Yeah, it's up to Asim Mahmood's heroics now. Can he deliver? Can he hit a few sixes here to bring Sindh back into the game? Because at the moment they're way behind. Sad faces, definitely, because they know they are behind this game. Saim Ayub and Saud Shakil on the right. South played really well, so did Saim Ayub. But they know that they are behind.
They need a couple of sixes here. It's not going to be easy. They're giving nothing to the Sindh batters to work with. Even Asif has been kept quiet. Now they bowled according to the plan. They got their fielders right at the boundary line, and they're bowling exactly to their field. That is experience for you. And I'm sure Shoaib Malik and Abdul Razak definitely will have a role to play, because they knew it. They have to deliver. They have to bring out their A game in this game. And they are delivering it. Outside off stump and straight to the fielder. Not a convincing shot, but it was just around the corner. They were struggling. And what an over that has been. Amir Yamin striking. And Sarfaraz will have to take a very slow walk back. Yeah, another slower one into the pitch by Amir Yamin. It has been the plan against Sarfaraz. We saw Hunain Shah doing it repeatedly in the last over, and in this over also Amir Yamin doing it. Just frustrated Sarfaraz. He had to go big, he had to get runs, and in doing so he's lost his wicket. A struggling inning. He's faced 10 deliveries for 8 runs. It's 129 for 5. Qasim Akram has led well Central Punjab tonight rather. He relied on his pacers and they have delivered. They did their best in the batting, and now it was up to the bowlers to bring that win home. Sindh would definitely be missing the services of Anwar Ali, because this is a tailor-made situation for somebody like him. We know that he is capable of hitting those big sixes. He's not included in the side. I'm sure they will be missing him. Although Asif Mahmood can hit big, but they're bowling very well. He's trying hard, he's trying his best. Have a look at that, Usama Hamid. Oh, they'll probably get another. But that effort has been superb. They're all on their toes. Excellent. That is good teamwork. This is the last one. Another slow one into the pitch. Sarfaraz wanted to go over the head of that extra cover fielder. Usama Mir could not quite execute it, could not get that elevation. That is a good wicket. Amir Yamin is having a good day. Yeah, it's not just the change of pace, it's the execution. The areas they've been bowling made things quite difficult for Sindh. Wild swing. It's not going to work. Again, a good delivery. He's itching to go big, but nothing's working for Sindh right now. Yeah, I think it's getting tougher and tougher. 36 runs of 10 deliveries. The required run rate, guess what? 21.60. What can Asim Mahmood do? We've left too much for him. That middle period when Saud and Saad were playing, I think that was the period they missed out on. And again, swing and a miss. Hunain Shah, you have to give credit to this youngster, keeping his nerves together, bowling in the right areas. That is good pace. Although he was expensive in his first 2 overs, but what a comeback this young lad has done. At a very important time for Central, he is delivering. It's not easy conditions. It's very humid here in Multan, especially for these young fast bowlers. This big game, nerves, everything happening. And if you're able to deliver under these circumstances, you do have a character. Last 18 deliveries, just 13 runs coming. This is probably trying too hard to go leg side. He's good straight down the ground. This time he finds the connection, but just for 1 run. Central Punjab is all over Sindh now. Yep, 35 of 8. It's a daunting task. I don't want to say that it is impossible,
because anything is possible. Looks like a very difficult one. Qasim Akram, Shoaib Malik, they've all done a great job. They've planned well. The strategy was spot on against Sindh. They got enough runs to put pressure, and they've bowled brilliantly. He's focused, very focused. You have to give credit to Shoaib Malik, talking to the bowlers, giving all the insights he can. They've responded well. Central Punjab definitely gaining some momentum in this tournament. Slight change in field. They've sent 45 back to the boundary. From mid-off, third man inside the circle. Leg side is all protected against Faraz. He goes straight. The fielder was just brought inside the circle and he exploited that area. Lucky boundary for Sindh and for Faraz. Shoaib Malik was really disappointed staying at mid-off, because he came all the way from mid-off, long off, to just tell him where to bowl, and he bowled right in the zone that he was searching for, outside the off stump. But look at Shoaib Malik, right on your screen. He was disappointed. He was not happy. That's an easy picking shot for Faraz. Yeah, that wasn't the plan probably. They wanted him to bowl into the wicket. Leg side was protected. Now we've got long on, long off in place. 45 came inside. Full toss. Been gently dealt with. I don't think they're going to allow the second. They got the boundary after 20 deliveries. 19 gone, Sindh 137 for 5. Amir Yamin to deliver the last legit 6 deliveries. Equation, Sindh needs at least 5 sixes. Pretty simple. But the worst part is that Asif Mahmood is not on strike, who has the more chance of hitting big. They took the single on the very last deliveries. Faraz will be facing. He's very talented, but this is a pressure game. This is a different situation. Can he deliver? Great change of pace. That has been their attribute of bowling tonight. Central Punjab Pacers. Yeah, I'll have to give it to Ahmed Danial. His spell, I think he really brought the Central back in the side. He's on your screen, very well bowled. He bowled with some venom, with some pace, some hard length deliveries, the Yorkers. He was brilliant. My player of the match. Way outside off stump. And they're pushing for second, no. They're not interested. Definitely, I think that was the game-changing spell. Ahmed Danial. He came into the playing 11, had his first game in Multan. And usually you would think that he might struggle to understand the surface. It was spot on, that delivery to get rid of Saim Ayub. It was brilliant. Has found the leading edge. Will run away for a boundary. Too little, too late for Sindh. Absolutely. Another slower one into the pitch. He had to go just one hand off the bat. The power taking it away towards the boundary. 24 off 3. Sindh will need to reconsider a lot of things. They won the toss, decided to bowl first. They were heavily relying on Shurjeel again. What a good, decent start, Saim and Saud, but then things went haywire for them. No sign of boundary, just a single down the ground. Central Punjab, they'll be happy.
how this team has been coming together. Oh yes, in a must-win game, they've been spot on with everything. Qasim Akram, that cameo that he played, scored a 50. And after, when they had to defend that total, they've done it brilliantly, courtesy to that wonderful fast bowling spell. Early on it was off spinners, and then it was up to the fast bowlers. They've been spot on. Wild swing again. No connection whatsoever. Central Punjab, you have to give it to them. Abdul Razaki will be really happy. They lost the initial 4 games, and out of 5, they won 4. They cannot afford any mishap right now. They have to win all their remaining games to stay in the contest. They might be taking off at the right time. Last delivery. 24. It's over. Found some connection, will go for the maximum, but that's it. That's the game for Central Punjab. You have to give credit to this. They all came together, they played their role. Well led by Qasim Akram, the spinners did their work, the batters did their work, but you have to put your hand down to the pacers, each and every one of them. Well, that is an excellent victory. They must be very proud of this effort. The Central boys, they won it by 17 runs in this all-important game. They had to stay in this tournament. They won it quite convincingly. He would be a happy man, Abdul Razak, the head coach for Central Punjab. What a wonderful effort. It's a thoroughly good team effort. Everyone has contributed. And the man on your screen, Ahmed Danial, I think in my opinion, he is the one who's brought them back in this game and won it for Central Punjab. Qasim Akram has been very focused tonight. Shoaib Malik, another one who takes responsibility whenever he walks on the field, leading this new pack. Again, you have to give credit to Ahmed Danial. As you said, his spell was the turning point. Everyone else, he delivered. Yeah, they've made a great comeback in this tournament, winning 4 games out of the last 5 they have played here in Multan. And the momentum definitely on their side. They made a few changes. They dropped their senior members. They brought in some youngsters. They brought in Ikhlaq. They traded Amir Yami into this side. Faizan they brought in, I think the moment they brought in Faizan, it just changed their luck. And he's been brilliant up the order. And now Ahmed Danial, he was not played for the last few games. He's made a comeback and he has made a mark. He's made the difference after coming into the side. Handshakes. Shoaib Malik right up there. He has his own contribution in this game too. Central Punjab is developing a habit of, defeating the table toppers. First they did it with KP, now Sindh. Nothing much to talk about. Saim Ayub, 46 of 33, and Saud Shakil. Very important partnership among these two, 44 of 28. The rest was struggling. Clearly, that's evident. Yasif Mahmood, the heroic, did not work for him tonight. 13 of 13, and Faraz, scoring 12 of 6, only could manage 149 on board. That is a terrific bowling unit. Amir Yamin, 1 wicket, 27 runs. Qasim Akram, no wickets, but he kept things tight. 1 wicket on hand, 1 for Shoaib Malik. But the pick of the bowlers was the Ahmed Danial. 4 overs, 24 runs and 2 wickets. He bowled at the right time and bowled it beautifully. Sindh, the table toppers, had to accept defeat. Central Punjab, they'll be happy bunch. They're gaining momentum, strength by strength. And everyone is putting their hand up, taking responsibility. That's how things started with Sindh. Saim Ayub, again, every time he walks out, he looks in full control. He just capitalized that power play. Glorious drive off the back foot, off the front foot. This one was one to watch, delight to watch him bat. Picked up nicely, he went for a maximum. That was just a jab. Hard effort there by Tayyib. Things were really cool. Rajil, he did took some time. Then he just unleashed himself, but not for a long time. Shoaib Malik had other plans. Just taking the pace off, inviting him to go big.
and he ended up in Usama Mir's hand. Though Shakil, the captain, had to make an impact. Loose deliveries helped them to develop this partnership. But then Ahmed Danial came in the first over. He took some time. Sindh was dominating till then. Boundaries were coming. Few lapses in the field. This was glorious shot. Easily done for a maximum. Some pace we witnessed from Ahmed Danial. And that was the turning point. Abdullah with no problems there. So Shakil went on to display his stroke play. This was half attempt. Really couldn't capitalize it. Was given not out. They survived that one. That was colossal. Just traveling all the way for a maximum. This was done by Hunain Shah. Few hits. Continued the momentum towards Sindh. And right the next ball, this happened. Now they had to go big. Faraz Ahmed, a little too late for him. It was up to Faraz in the end. It did try a few tricks. Asim Mahmood, he was sent up the order though before Faraz, but couldn't do much. And in the end, this Faraz did hit a few, but were not enough to win Sindh the game. And yes, the disappointment was definitely there. And CP winning it by 17 runs. It was a great team effort, and that has been a superb result for Central Punjab. Toss was won by Sindh. They decided that Central will bat first. They scored 166 runs. Qasim Akram was brilliant, 51 runs. The captain's knock, Sohail Khan taking 3 wickets for them. And in reply, Sindh could only manage 149 runs. Saim Ayub played well for his 46. South 44 of 28, but it was that man, Ahmed Danial, in the bowling lineup who made the damage. 2 for 24 in that crucial period of time. Amir Yamin also getting 1 and Shoaib Malik also getting 1. In the end, a perfect result for Central, winning it by 17 runs. This win will surely boost Central Punjab. Sindh is gradually coming down, now on second, and Central gaining momentum. They've got the points, the 2 important points they cannot lose from here now. And that's how the standings are for the teams. We'll take a break and we will join you with the post-match presentation after a while.
Hello and welcome to the post-match presentation of match 26 between Central Punjab and Sindh, and a brilliant game, but eventually Central Punjab stays alive in the tournament, win this one by 17 runs and get the important 2 points. Before we start off with the presentation and the awards, I'd like to welcome Mr. Mohammad Noman Ashraf. He's Sales Executive, Kingdom Valley. Thank you for joining us once again. And now I'll call the losing captain from Sindh, Saud Shakil, to come forward, please. We'll have a few words. सऊद स्टार्ट जो है वो अच्छा रहा. मैं इस वक्त बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, जो आपने डिसीजन लिया था पहले करने का, लेकिन मिड ओवर्स में शायद रन्स ज़्यादा चले गए, हालांकि विकेट्स ले ली थी आपने अप फ्रंट. जी ऑब्वियसली जिस तरह कासिम ने बैटिंग की बीच में आके आउटस्टैंडिंग थी और आमिर यामीन ने जिस तरह फिनिश किया, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आज मुझसे पिच रीड करने में भी थोड़ी सी गलती हुई. पिच काफ़ी स्लो साइड पे था आज. तब भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल आपने पुल बैक कर लिया था. 160 और जो है पहले मैच में भी चेज हो गए थे, लेकिन यहाँ शायद पावर प्ले इतना अच्छा नहीं मिल पाया. जी थोड़ा सा पावर प्ले में भी रन शॉट होगा, फिर मैं आखिर में सेट होकर आउट हो गया. अगर एक सेट बैट्समैन खड़ा रहता है तो उसकी एक अलग बात होती है, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए थोड़ा सा पिच मुश्किल था, स्लो साइड पे था. तो अगर मैं वहाँ खड़ा रहता तो हो सकता है अच्छा फिनिश हो सकता था. इन दी एंड आपके 10 मैचेस तो हो गए. बैटिंग कॉम्पोजिशन जो अब आपके पास अवेलेबल है, अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, आपके टॉप हैवी है, लेकिन लोअर मिडिल में या लोअर ऑर्डर में पास पावर हिटर नज़र नहीं आया कहीं. हाँ बेसिकली इस मैच से मैं पहले अनवर अली थोड़ा सा अनफिट हो गए, तो बीच में उमैर भी काफ़ी बीमार रहे, तो हो सकता है वो कम बैक करें दोनों टीम में, ताकि हमारी टीम स्ट्रांग हो जाए. चलिए लेट्स वेट एंड सी. 10 मैचेस 10 पॉइंट्स, वेल प्लेड. थैंक यू वेरी मच. Saud Shakil, captain Sindh ke. Now I'd like to announce the Kingdom Valley player of the match, and this is shared between the captain, Qasim Akram, and along with him Amir Yami. So I'll request both of them to come forward, and Mr. Mohammad Noman Ashraf, Sales Executive, Kingdom Valley, will present the cash award of 25,000 rupees and also the trophy to the two men with the player of the match, Qasim Akram and Amir Yamin. I'll talk to Amir Yamin first. Amir, डिफ़िकल्ट होता है, एक ऑलराउंडर की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ना कि सिर्फ दोनों डिपार्टमेंट में परफॉर्म करना है, लेकिन जिस नंबर पे आप बैटिंग करने आते हैं टाइम ज़्यादा नहीं होता कि आती हिट्स लगानी है. जी बिल्कुल सिकंदर भाई, ऐसे होता है कि एज एन ऑलराउंडर आपको हर किस्म की कंडीशन के लिए जो है तैयार रहना पड़ता है. बाकी यही कोशिश करता हूँ बॉल टू बॉल खेलूँ और अपना स्ट्राइक रेट जो है वो कम से कम 200 और 170 के करीब रखूँ, और जितना बेहतर हो सकता है अपनी टीम के लिए अच्छा करूँ. बैटिंग करने जब आप आए तो टारगेट आप कोई चेस कर रहे थे अपने माइंड में कि मुझे यहाँ तक ले जाना है? जी बिल्कुल, जैसे हमारी विकेटें गिरी थी एकदम, तो बस यही प्लान था कासिम ने और मैंने ये प्लान किया था कि यार ओवर्स काफ़ी पड़े हुए हैं, 7 ओवर्स हैं, तो कोशिश करेंगे लंबा जाएंगे तो इंशाल्लाह 165 170 रन अच्छा रन होगा इधर, और वही वो अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीते. बॉलिंग में आपका क्या प्लान था? अपनी बॉलिंग की आपकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी सऊद ने बोला कि थोड़ी स्लोअर साइड पे थी पिच. जी बिल्कुल सिकंदर भाई, देखें एज ए बॉलर आप जब नए बॉल से बॉल करते हैं तो यही कोशिश होती है कि विकेट टू विकेट बॉल करें और ज़्यादा रूम ना दें, और वेरिएशन आई थिंक जैसा आज पिच था उस पर वेरिएशन बड़ी कामयाब हुई है, जिसमें मैंने स्लो पहला ओवर भी बड़ा अच्छा हुआ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह डेथ में बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई, थोड़ा सा काम करके आऊँ अपनी डेथ बॉलिंग पे भी, तो अब ये है कि कोशिश करूँ बेहतर करूँ और भी. चलिए, कांग्रेचुलेशंस. आमिर यामीन shared player of the match with his captain Qasim Akram. We'll talk to Qasim. कासिम, जीत होती है, 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं टूर्नामेंट में अलाइव रहने के लिए, लेकिन ओवरऑल इस मैच को देखेंगे तो क्या पॉजिटिव्स हैं जो आप लेके जाएंगे? जी देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, और मैं इस चीज़ का क्रेडिट अपनी बॉलिंग को देता हूँ. बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ऑल टीम सब के एफर्ट से हम मैच जीते हैं. आपके खुद की इंडिविजुअली ज़रा थोड़ा आपने अपने आप को शफल किया है. कल के मैच में ऊपर आए थे बैटिंग करने, आज आप नीचे गए, आज कारामद भी साबित हुआ, तो अपने लिए कौन सा नंबर ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? जी मैं मिडल ऑर्डर हूँ और मैं मिड ऑर्डर ही खेलता हूँ, वहाँ पे कंफर्टेबल फील करता हूँ. सो आज मैं उस तरह ही गया हूँ और अल्लाह ताला ने कामयाबी ताकि. कुछ टफ डिसीजंस थे आपके एज कैप्टन, आपने उसामा से बॉलिंग नहीं कराई, अली असमन से बॉलिंग नहीं कराई, क्या रीज़न था कि ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स थे, लेकिन वो तो शायद आपको पहले ही मालूम था? जी बिल्कुल, देखें सिचुएशन के मुताबिक हमने बॉलिंग करवाई है. हमारे पास 3 पेसर थे तो और ज़्यादा लेफ्टी थे उनके पास, तो मैं और शुएब भाई ने बॉलिंग की है, अच्छे स्पेल किया शुएब भाई ने भी और मैंने भी, और बाकी मैं अपने मेन बॉलर से ही रहा हूँ, फास्ट बॉलर से. एंड में नज़र आ रहा था आप और शुएब काफ़ी नाराज़ हो रहे थे, हालांकि 2 बॉलों पे 36 भी अगर चाहिए, शायद रन रेट आपने बेहतर रखना था, डिस्टेंस ज़्यादा रखना चाह रहे थे जीत का. जी बिल्कुल ऐसा ही था. रन रेट क्योंकि तकरीबन सारी टीम 5 मैच जीते हुए हैं, रन रेट अच्छा होगा तो वही टीम आगे आएगी. चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन हो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है पिछले 2-3 मैचेस में. गुड लक टू यू. थैंक यू. Qasim Akram, captain of Central Punjab, and that concludes the presentation. That's how the teams are sitting now. Sindh drops to second place. Central gaining 1 position and 2 important points in this all-important tournament.
More action will unfold in Kingdom Valley National T20 Cup tomorrow. We've got first game against Central and Northern. That will be at 2:40. We'll join you for KP facing ATS Southern Punjab match 28, 7:10 live from Multan Stadium. Till then, take care, have fun, and we'll join you tomorrow. Good night. And welcome to Multan Cricket Stadium for game number 26. It's Central Punjab taking on Sindh. Oh yes, lack of form. Down the wicket, attack, maximum. That's gone for 6. इस बार बोल्ड हो गए. Nicely played and nicely placed. Well done. Yes, again, another one. जोरदार शॉट. समथिंग हैज हिट. इस चौके के साथ ही ये 50 रन मुकम्मल कर लिए. कप्तान की इनिंग्स खेली है. Oh, he's missed that. It's gone right through for boundary. Shot. You know what he's doing is he's making room and he's cutting that ball from in front of the stumps. Oh, that's a rare bad ball. That's a rare bad ball. He's absolutely angry with himself, Shoaib Malik. आहिस्ता गेंद थी और एक आसान सा कैच किया अली असफर के पास.